Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. I want you to picture something with me for a second. Go. Imagine a CEO. They're striding through the main corridor of this massive corporate office. Oh, I can picture it. Right. They're walking with absolute confidence, head held high, looking every bit the visionary leader you see featured on the cover of some glossy business magazine. Totally. But there is a glaring, just undeniable problem here. In terms of the company's brand new strategic direction, or maybe some incredibly obvious catastrophic operational failure, this CEO is entirely completely naked. Ah, like the classic story, the emperor has no clothes. Exactly like that. I mean, the new product line is a functional disaster. Or maybe it's this massive software rollout that costs millions and it's fundamentally broken. It's driving clients away. And everyone knows it. Everyone in the office sees it. It is painfully obvious. You see it from your cubicle. Your colleagues see it over their monitors. Right. Yet, as the CEO walks by, employees nod. They smile warmly. They offer these enthusiastic compliments on the brilliant new direction. You know, great vision, boss, or truly innovative approach. It's just a performance. It's totally a performance. But then the CEO passes, the heavy glass doors of the executive suite finally close, and almost instantly the atmosphere shifts. The masks come off. Yes. Behind closed doors, in the break rooms, in those veiled, anxious whispers over encrypted messaging apps, the truth finally bleeds out. Everyone knows the strategy is a failure. Exactly. Everyone clearly knows the emperor has no clothes. But in public, in the strategic planning meetings, in the all-hands town halls, absolute deafening silence reigns. Wow, yeah. So I want you to consider your own professional history for a moment. How often have you witnessed, or maybe even actively participated in, this exact scenario? That's a heavy question to sit with. It really is. How many times have you found yourself smiling and nodding at a naked emperor, knowing full well the ship is sinking? You know, it is a profound and, frankly, uncomfortable reality to confront right out of the gate. Yeah, it really hits close to home. It does. And what makes that scenario so chilling is just its universality. Because this isn't just a cynical fairy tale or some casual, bitter observation about modern corporate life. No, not at all. That very dynamic, the collective, paralyzed silence in the face of obvious failure, that is the central premise of a groundbreaking, incredibly rigorous academic paper. And that's what we're talking about today. The story we are exploring is rooted in an actual paper published in the Academy of Management Review, Which is a highly prestigious FT50 index journal. It doesn't get much bigger than that. It really doesn't. The paper is titled Organizational Silence, A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World. Right. And it was written by two brilliant researchers, Wolfe Morrison and Francis J. Milliken, both from New York University. They are the ones who officially named this. They meticulously dissected this invisible, suffocating workplace force. They really did. But, you know, before we get into the mechanics of their research, I do want to pause for just a quick moment to share an important update regarding our journey together on this channel. Yes, we have some significant structural changes to share about how we will be delivering these conversations to you moving forward. We do. So, starting from this month, March 2026, our schedule is moving to a weekly format. We will be releasing a new exploration every Sunday and Monday. Every Sunday and Monday. Right. On Sundays, we will focus on a classic paper or a comprehensive book review, just like the foundational text we are analyzing today. I'm really excited about those classic reviews. Me too. Meanwhile, our Monday releases will maintain their focus exclusively on publications from top-tier, peer-reviewed journals. That way, we're keeping you at the absolute cutting edge of new research. Which is so important. It is. And we just want to say, we deeply love our loyal subscribers, and we want to say a profound thank you for supporting this initiative and just growing with us. We really do appreciate you. Now, you might be wondering about the why behind the specific schedule shift. And it's simple, but it touches on something much larger than our channel. It's a global issue, really. Exactly. AI-assisted audio generation and the complex data processing that supports platforms like ours, they are surprisingly heavy on nature and climate. Specifically regarding the massive water intake. Yes, the considerable water intake required to cool the back-end data centers that power these tools. It's staggering when you look at the numbers. It really is. So, limiting our weekly release schedule is our tangible way to give back to global climate change initiatives. We want to ensure our intellectual footprint doesn't irresponsibly expand our environmental one. It's a necessary recalibration for sustainability.
We have to be mindful of the physical infrastructure supporting our digital explorations. Absolutely. And we are confident we can do this without losing any of the richness, depth, and intimacy of our discussions. However, there is one very special, long-standing exception to this new rule. Ah, yes. That's right. We plan to keep our yearly tradition of Nobel Prize Week completely intact. I was hoping you'd say that. Of course. During the month of October, we will feature the Nobel-winning work every single day for the entire Nobel Prize announcement period. Keeping in line with our annual tradition since our inception. Exactly. It's a celebration of human ingenuity that we simply refuse to compromise on. And finally, for those who want to explore further, we now have a brand new dedicated website for our community. Oh, that's right. You can find the link waiting for you right there in the show notes. And speaking of the show notes, you will absolutely want to check them today for a direct link to Morrison and Milliken's paper. Definitely do that, because to give you a sense of its scale, according to Google Scholar, this paper has been cited more than 5,183 times. That is just a staggering number. It really is. In the ecosystem of academia, a citation count that high signifies a paradigm shift. It makes this paper an absolute, undeniable classic text in the canon of management research. It's foundational. So whether or not you subscribe to this channel, I urge you to carve out some quiet time to read this thoughtfully crafted and rigorously peer-reviewed paper. It is so worth your time. It really has the power to permanently alter how you view the architecture of your workplace. So our goal today is to walk through this paper as if you, the listener, are someone totally new to academic research. Yeah, just starting out. Right. Imagine you are just about to start your own research journey, sitting in a quiet, sunlit library with us. We are going to explore every major concept of the paper together. Translating all those complex sociological frameworks into simple, jargon-free explanations. Exactly. We want to maintain an intimate, soothing space for us to think, reflect, and uncover the invisible forces that dictate so much of our waking lives. So let's start with how Morrison and Milliken fundamentally alter the lens through which we view workplace dynamics. Okay, let's do it. In the introduction to their paper, they are essentially redefining the entire problem of employee silence. Well, historically, when organizational psychologists and management researchers looked at this concept, they framed it almost exclusively around the ideas of voice or whistleblowing. Oh, I see. So they viewed speaking up or staying quiet as a deeply individual choice. Precisely. The central academic question used to be, why does one specific person, say, a brave junior engineer or a disgruntled senior accountant, decide to raise their hand while another person keeps their head down? You know, if we look at it through that old lens, we are putting all the pressure and, frankly, all the blame on the shoulders of the single employee. That's a lot of pressure. It reduces a complex workplace dynamic to a simple binary question of personal courage versus personal cowardice. Basically, if you don't speak up, you just aren't brave enough. That was the prevailing assumption for decades. It was treated purely as a personality variable. Wow. But Morrison and Milliken look at that assumption and they completely dismantle it. I'd flip it on its head. They really do. Yeah. They argue that fixating on the individual is a profound analytical failure. It is missing the forest because you are entirely focused on analyzing a single tree. So what do they propose instead? They propose that we must look at organizational silence as a collective systemic phenomenon. It is not an aggregate of individual personality quirks. Right. It's about immense, invisible, social and structural forces operating outside the individual that make remaining silent the absolute rational default response for the entire organization. It is a shared, collective holding of breath. That's a great way to put it. To really capture the difference between individual silence and systemic silence, I want you to consider this scenario. Okay. It's the difference between one person choosing not to touch a hot stove because they are naturally a timid person versus an entire family refusing to enter the kitchen at all because there is an active gas leak. Oh, that is a perfect analogy. Right. If you use the old academic framework, you spend all your time analyzing the timid psychology of the family members, asking why they don't want to cook. Which misses the actual danger completely. Exactly. Morrison and Milliken are saying, stop psychoanalyzing the family and start looking for the gas leak. We are analyzing the toxic environment today, not the individual who is just trying to survive it. The gas leak metaphor captures the essence of their argument beautifully. The environment itself has become hazardous. And it dictates the behavior of everyone within it, regardless of their individual bravery. Exactly.
And what makes this environmental hazard so fascinating is the massive, glaring paradox the authors highlight right at the beginning of their research. Oh, the paradox between what companies say they do and what the data proves they actually do. Precisely that gap. At the time this paper was published, and honestly this remains largely true today, management rhetoric was entirely saturated with concepts like empowerment. Oh yeah, open door policies, flat hierarchies, transparent communication. You hear it everywhere. Right. If you read any corporate brochure or onboarding manual, you would think modern businesses were utopian democracies that thrived on employee input. But the empirical data tells a much darker, almost dystopian story, doesn't it? It really does. The authors cite a highly revealing survey from Industry Week involving over 800 managers. 800? That's a solid sample. Very solid. And in that specific survey, only 29% of first-level supervisors actually believed their organization encouraged employees to express opinions openly. Wow. Only 29%. And to compound that, they reference another critical study finding that over 70% of employees felt actively afraid to speak up about issues they encountered at work. I just want everyone listening to sit with that number for a second. Over 70%. It's massive. That is not a fringe minority. That is a vast, overwhelming majority of the workforce operating under a blanket of fear. That is a profound level of anxiety vibrating just beneath the surface of the daily grind. It proves that the empowerment rhetoric is often just window dressing. It totally does. So as we move through these concepts, I want you to reflect on your own daily reality. When you sit in a meeting and bite your tongue, instead of critiquing a flawed project timeline, do you do it because of some inherent flaw in your character? Probably not. No. Or do you do it because you can smell the gas leak? Because there is a silent, invisible, shared agreement in the room that clearly dictates, we just don't talk about that here. And if we accept that this silence is systemic, the immediate pressing question becomes, where does the system originate? Who is building these invisible walls? That is the million-dollar question. Morrison and Milliken trace the development of this organizational silence back to two fundamental, deeply ingrained origins within the management structure itself. Okay, what are they? They argue that silence originates from managers' fear of negative feedback and managers' deeply held implicit beliefs. Let's examine that first origin point, the fear of negative feedback. Because on the surface, it seems almost too basic. It does seem simple. We all hate being criticized, right? Is it really just fragile egos driving a systemic corporate failure? Well, it is basic, but we cannot underestimate how profoundly powerful that human drive is. Humans naturally, biologically, and psychologically recoil from information that makes them feel vulnerable or incompetent. Or threatened. Exactly. The authors draw heavily on the foundational work of organizational theorists, Chris Argyris and Donald Schoen here. Oh, their work is classic. Argyris and Schoen demonstrated that managers, by virtue of their elevation in the hierarchy, feel a massive, overriding psychological need to avoid embarrassment or threat. You know, that makes intuitive sense when you consider how we promote people in society. Right. When you are elevated to a position of authority, your entire professional identity, your compensation, your self-worth, they all become inextricably tied to your perceived competence. You are literally paid to be right. And because you are paid to be right, any feedback from a subordinate suggesting that something is wrong isn't just processed as neutral data. How is it processed? It is perceived as a direct, aggressive threat to the manager's power, their credibility, and their identity. Wow. If a frontline worker tells a director, this operational process you designed is failing, the director's brain rarely translates that to, oh, here is an opportunity for process optimization. No, I imagine it translates to something much more personal. It translates to, you are a failure, you do not deserve your position. And because that feeling is intolerable, managers subconsciously build defensive walls to ensure that kind of destabilizing feedback never reaches them in the first place. It's an involuntary flinch, almost. But it's not just a reactionary flinch, is it? It's not just an ego defense mechanism. Well, it goes deeper. This is where the paper's framework becomes truly expansive. It also delves into implicit beliefs. Yeah. These are the quiet, unspoken, often unexamined rules running in the background of a manager's mind. And the implicit beliefs are arguably much more insidious than the simple fear of embarrassment. Why is that? Because they masquerade as objective reality. They are the philosophical bedrock upon which managers build their departments. The authors break down 3 specific subconscious beliefs that managers historically hold. Let's hear them.
The first is the belief that employees are fundamentally self-interested and untrustworthy. That's a bleak view. It is bleak. But this ideology doesn't just appear out of nowhere. It is deeply rooted in traditional economic models of human behavior. Specifically the idea that people are inherently effort-averse and only care about maximizing their own personal utility. Exactly. This sounds exactly like what business schools used to explicitly teach as Theory X management. Yes. The classic Theory X. Right. The fundamental cynical assumption that the average worker inherently dislikes work and will actively avoid it if given the chance. Therefore, if you don't rigidly control them, monitor them, and threaten them with punishment, they will slack off. So if a manager views their workforce through that hyper-cynical lens, why would they ever listen to employee feedback? They wouldn't. If an employee says, this process is inefficient, the Theory X manager just assumes the employee is trying to get out of doing hard work. That is the exact mechanism of dismissal right there. The belief invalidates the voice before it even speaks. That's tragic. What's the second belief? The second implicit belief Morrison and Milliken identify operates in tandem with the first. It is the belief that management simply knows best. Which is incredibly arrogant. It is. The logic here is incredibly circular, but it is dangerously powerful. The internal monologue goes, I am at the top of the hierarchy. The hierarchy rewards competence. Therefore, I must be the smartest and most capable person in the room. Right. And if I inherently know more than the subordinates, then their input is, by definition, less valuable, less informed, and mostly just a distraction. It creates a closed loop of arrogance. It really does. And that brings us to the third implicit belief, which I think might be the most destructive to modern, supposedly collaborative workplaces. I agree. The third belief is the deeply held conviction that dissent is inherently bad. Oh. It is the idea that unity, total agreement, and seamless consensus are the ultimate indicators of organizational health. This is the good vibes only toxicity we see in so many corporate cultures. Yes. If everyone agrees with the strategy, the manager feels secure. We are a strong, unified team. But if someone voices a dissenting opinion, or questions a core assumption, that person isn't viewed as offering a helpful critical alternative. Under this implicit belief system, the dissenter is immediately labeled a troublemaker. or a complainer, or someone who is not a team player. Dissent is treated as a virus that must be eradicated to preserve the health of the consensus. Let me play devil's advocate for a moment to ensure we are grasping the nuance here. Sure. When we describe managers holding these beliefs that employees are lazy, that management is infallible, that dissent is a disease, are we suggesting that managers are consciously doing this? No, not usually. Like, are executive teams sitting in mahogany boardrooms actively plotting to suppress the workers and silence the masses? Or is this something operating beneath their conscious awareness, like a piece of legacy software they don't even realize is running their operating system? That's a vital distinction. The authors are remarkably clear and empathetic on this point. It is almost entirely the legacy software. It's not malicious. It is rarely a conscious, malicious conspiracy. To explain how this happens, they introduce a brilliant conceptual distinction from the literature, the difference between theories in use and espoused theories. How do those two concepts play out in a real-world scenario? Okay, so an espoused theory is what you articulate to the world. It is what you say you believe, and crucially, it is often what you genuinely think you believe about yourself. Give me an example. A manager will stand up at an all-hands meeting, look out at the crowd, and say with total sincerity, "My door is always open. We thrive on innovation, and innovation requires your honest, unfiltered feedback. We value diversity of thought." That is their espoused theory. They want to be the enlightened leader. But the rubber meets the road when the meeting ends. Exactly. The theory in use is the actual implicit cognitive program that governs their behavior in a moment of stress or challenge. Oh, I see. So imagine a junior analyst actually takes the manager at their word. They walk through that open door, and present data showing the manager's pet project is bleeding money. Uh-oh. In that exact moment, the manager's theory in use, driven by their biological fear of looking incompetent and their implicit belief that dissent is insubordination, overrides the espoused theory. They don't consciously think, I am going to crush this person. Exactly. Instead, their body language shifts. They frown. They cross their arms defensively. They interrupt the analyst. They dismiss the data as flawed or tell the analyst they just don't understand the macroeconomic big picture. They loudly proclaim they want feedback, but their subconscious defensive reflexes instantly punish the person providing it.
That gap between our idealized intentions and our stress-induced reflexes is where silence is born. It's an involuntary flinch. It really is. So, if these defensive reflexes and legacy beliefs are the background software running in management's minds, we have to ask, where does this software run the most aggressively? Some places are definitely more susceptible. Right. If management's internal architecture is built on these defensive beliefs, there must be certain corporate environments where this software takes hold more easily. Some companies have to be more susceptible to the gas leak than others. They absolutely are. The authors dedicate a significant portion of their framework to outlining specific propositions about what kinds of companies are veritable breeding grounds for organizational silence. They call these the conditions that foster the implicit beliefs. Yes. Let's dissect these predictors, because this is where the theory becomes highly diagnostic for you as a listener. You can start looking around your own office for these clues. For sure. The first major predictor they identify has to do with the actual educational and functional background of the executive team. Yeah, that's right. They propose that an organization is significantly more likely to develop a climate of silence when its top management team. The TMT is heavily dominated by individuals with educational or functional backgrounds in economics or finance. That is a fascinatingly specific demographic to call out. It really is. I mean, if I'm an executive who came up through the marketing department or engineering or human resources, I might have a completely different worldview. But why does a background in finance specifically calcify these implicit beliefs? It connects directly back to the first implicit belief we discussed, the assumption of self-interest. Right. Traditional economic education, the kind taught in premier business schools for decades, relies heavily on agency theory and neoclassical models that assume humans are strictly rational actors. Solely seeking to maximize their own personal utility. Yes, if you spend your formative academic years and your entire early career operating inside frameworks, then mathematically assume people only act out of calculated self-interest. That becomes your default lens for humanity. Precisely. You become cognitively conditioned to expect selfish behavior. Therefore, when you eventually become a CEO or a CFO, you are much more likely to subconsciously view your rank-and-file employees as untrustworthy agents who require strict oversight. Wow. If an employee comes to you with a suggestion to improve a workflow, your finance-trained brain doesn't see a passionate employee trying to help the company. What does it see? It sees an agent trying to manipulate the system to reduce their own labor. You discount their voice because your academic framework tells you their motives are impure. That is a staggering realization. The academic models you internalize in a university classroom can literally dictate whether or not you listen to your employees 20 years later. It's a heavy thought. What is the next structural predictor they identify? Demographic dissimilarity between the executive team and the lower-level employees. Okay, break that down. When the people at the very top look fundamentally different from the rest of the organization, whether that difference manifests in gender, race, ethnicity, socioeconomic background, or age, it breeds a subtle, pervasive, and highly destructive form of distrust. If we look at the sociology of this, it makes perfect, albeit tragic, sense. Humans naturally, almost gravitationally, gravitate towards similarity. We do. It's the concept of homophily birds of a feather flock together. We find comfort in people who share our lived experiences. It goes even deeper than comfort, actually. It touches on social categorization theory. We naturally categorize people into in-groups and out-groups. Right. When a top management team is entirely homogenous, say, exclusively older men from similar elite universities, and the workforce below them is highly diverse, a massive empathy wall goes up. The empathy just isn't there. The management team may subconsciously view the perspectives of the outgroup, the diverse workforce, with suspicion or profound misunderstanding. Because they don't share the same life experiences. Exactly. They struggle to validate the realities those employees are reporting. They might view an employee's legitimate concern as an exaggeration, simply because the executive has never personally experienced that specific friction in their own life. It's the ultimate blind spot. If a board is uniform, their collective blind spot is massive. And anything an employee says that falls into that blind spot is dismissed as noise. It really is. And speaking of how we categorize employees, the paper also highlights the physical makeup of the workforce itself as a predictor, specifically regarding contingent workers. Yes. A heavy reliance on freelancers, temporary workers, gig workers, or short-term contractors is a massive predictor of silence. And the mechanism here relies on how managers perceive the psychological contract between the worker and the firm, right?
Exactly. Because contingent workers are not permanent fixtures, managers invariably assume their relationship with the company is purely coldly transactional. The manager looks at the contractor and thinks, you are only here for 6 months. You don't have equity. You don't have a vested interest in the long-term health of this ecosystem. You just want your hourly rate. Right. Therefore, why on earth should I listen to your feedback on our 5-year strategic roadmap? And in doing that, the manager completely discounts the possibility that the contingent worker might actually be highly observant, deeply experienced, or genuinely invested in doing good work. By assuming the contingent workers are apathetic, management justifies completely ignoring their voices, which systematically reinforces the overall climate of silence. Are there any other major predictors? The final major predictors the authors point to revolve around the structural architecture and industry environment of the company itself. They suggest that mature, highly stable industries with tall, heavily vertical hierarchical structures are deeply susceptible. That makes sense. As are companies that operate with an intense overriding focus on cost control. The vertical hierarchy predictor makes immediate logical sense. I mean, if you are an entry-level worker and there are 8 layers of middle management between you and the vice president, your message has to pass through 8 different filters. 8 layers of fear, basically. Right. And if every one of those middle managers is terrified of passing bad news up the chain to their boss, the truth will be sanitized, watered down, or completely buried before it ever reaches the executive suite. It never stood a chance. But I want to extrapolate this framework to our modern business landscape for a second. When I read this paper, my mind immediately went to the modern tech sector. Oh, that's an interesting connection. Think about the companies heralded for their culture. The open plan offices, the casual dress codes, the ping pong tables, the rhetoric about having a flat hierarchy where anyone can slack the CEO. On the surface, it looks like the antithesis of the stuffy, silent corporation. Exactly. But based on Morrison and Milliken's predictors, even with the beanbag chairs, if the venture capital board dictating terms is entirely finance-driven, or if the executive team is completely homogeneous, or if they rely on a massive army of gig economy contractors for customer service, the invisible architecture of silence might still be thriving right beneath the surface. Your extrapolation highlights a vital distinction there. The aesthetic of an open culture is absolutely not the same as the psychological safety of an open culture. That's a great way to phrase it. You can wear a hoodie to the office. Yeah. You can have craft beer on tap. But if your manager's theory in use is driven by the implicit belief that dissent is a threat, you will rapidly learn to keep your mouth shut. The ping pong table is an espoused theory. The silence is the operational reality. Exactly. Which brings us to the actual mechanics of how this silence is built into the walls of the company. How do these abstract, invisible psychological beliefs manifest into the physical, daily reality of the workplace? Good question. Like, how do managers actually construct this architecture of silence? Well, when managers subconsciously operate on the belief that employees are self-interested and that dissent is dangerous, they inevitably, predictably build structures and policies designed to protect themselves and the organization from those perceived threats. Okay, so what's the first structural pillar? The first and most prominent structural pillar of silence is the centralization of decision-making. Meaning power is hoarded tightly at the very apex of the organizational pyramid. Yes. Managers simply do not involve employees in strategic choices because fundamentally they do not believe the employees have valuable, unselfish, or sophisticated input to offer. So you don't see cross-functional participatory committees that actually have real authority. You don't see task forces where ground-level employees are given a vote. Not at all. You just see top-down mandates handed down from the mountain. Exactly. The second structural pillar is a systematic lack of formal upward feedback mechanisms. No way to send ideas up the chain. Right. Even if a company wants to appear open, a silent organization will have no robust infrastructure for truth-telling. There is no regular anonymous polling. There are no town halls where unvetted, difficult questions are allowed. Or if they do have a suggestion, box physical or digital, it functions merely as an empty bureaucratic ritual. It exists solely for appearances, to satisfy the espoused theory of openness, but the suggestions are never analyzed, acted upon, or even genuinely read. But those are the formal macro-level structures. What about the micro-level? What do you mean? What about my Tuesday morning check-in with my direct supervisor? Because I might not interact with the centralized executive committee very often, but I have to talk to my boss every single day. Oh, yeah.
That is where the third and arguably most devastating pillar comes into play. Informal rejection. Informal rejection. This is the day-to-day, localized, interpersonal managerial practice of shutting down voice. The manager rarely has to explicitly articulate, "Do not speak to me about this." It's much more subtle than that. Instead, the suppression happens in the margins. When an employee tentatively offers a critique of a workflow, the manager might sigh heavily. They might subtly roll their eyes. Or they might frequently interrupt. They might become defensive and rigidly justify the status quo, or they might use a patronizing dismissal, saying, "I appreciate your passion, but you just don't have the visibility into the bigger picture that I do." It's the weaponization of microexpressions and dismissive language. It is? It sends a chillingly clear message that feedback is an annoyance, not a gift. It perfectly mirrors the concept of the threat rigidity effect that the authors reference in the text. That's a fascinating concept. I like to visualize threat rigidity like an armadillo out in the wild. Okay, an armadillo. Yeah, if you startle an armadillo, it doesn't try to negotiate with you. It doesn't survey its environment to find an optimal path forward. It just immediately, instinctively rolls into a tight, impenetrable ball. It rigidifies its defenses. Exactly. Management teams under stress do the exact same thing. They perceive negative input, even wildly helpful, well-intentioned negative input, as a threat to their ego or their control. So they roll up. And so the entire organization rolls into a ball. They close themselves off from the outside world, from external data, and from their own employees to protect their fragile center. Threat rigidity perfectly describes the systemic paralysis. The organization tightens up and becomes inflexible precisely at the moment it should be loosening up to adapt to new information. It's totally backwards. And this dynamic forces us to examine a pivotal shift in the paper's narrative. Up until now, we have been looking almost exclusively at what management does, their fears, their beliefs, their structures. Right. But a manager rolling their eyes doesn't automatically silence a company of 10,000 people. We have to explore how employees interpret those actions. How do we move from an empty suggestion box and a defensive boss to an entire workforce collectively agreeing to enter a vow of silence? Exactly. Because the CEO didn't send out a company-wide memo with the subject line, "Silence is now mandatory." Right. The employees have to deduce the rules of the game on their own. And they deduce those rules through a sociological process called collective sense-making. Sense-making. The paper introduces a foundational concept from sociology called symbolic interactionism. Stripped of its academic weight, symbolic interactionism simply posits that human beings figure out what is real, what is true, and what is dangerous by talking to each other. We don't just passively experience the world in isolation. No, we actively interpret it together. We are meaning-making machines, and we do our manufacturing in groups. So if I experience my manager rolling their eyes at me when I point out a flaw in the software, that's just an isolated, frustrating experience. On its own, yes. It only becomes a systemic rule when I log onto a private Slack channel or go to the break room and tell my coworkers about it. Exactly. Employees are keen observers of their environment. They look at the highly centralized power structures. They notice that the employee engagement survey results were never published. They experience the grumpy defensive managers firsthand. And then they gossip. They talk in the cafeteria, over drinks after work, in the quiet moments before a Zoom call officially starts. And through these continuous social interactions, they weave together a shared collective reality. They co-author a narrative about how the workplace truly operates. And in an environment governed by management's defensive reflexes, that shared story inevitably becomes, speaking up is entirely useless. Nothing will change. And worse, if you push too hard, it will get you fired. You know, what I find deeply tragic about this sense-making process is that the narrative the employees construct isn't always perfectly tethered to reality, is it? What do you mean? Well, the rumor mill can severely distort the actual level of danger. Oh, it almost always distorts it. The authors highlight a fascinating and somewhat tragic psychological reality. This grapevine process almost uniformly exaggerates the danger of speaking up. And the mechanism driving this exaggeration is called vicarious learning, right? Yes. Human beings strongly prefer to learn what is dangerous by watching what happens to others, rather than personally testing the electric fence themselves. Nobody volunteers to be the canary in the coal mine if they can avoid it. Precisely. So, imagine a scenario where one brave, outspoken employee openly questions a major policy shift during a department meeting. Okay. 3 months later, that same employee applies for a promotion
and doesn't get it. Ah, I see where this is going. Now, objective reality might dictate that management denied the promotion for a completely unrelated, totally valid reason. Perhaps the employee missed their quarterly sales targets by a wide margin. But the employee rumor mill doesn't traffic in nuance or objective performance metrics. Never. The grapevine instantly links the two highly visible events. The collective story becomes: Sarah spoke up against the policy in March, and management punished her by denying her the promotion in June. And suddenly the danger of using your voice becomes a mythic, overblown corporate legend. The monster in the closet grows 10 times larger than the actual threat. It does. Let me make sure I am fully grasping the implication here. Sure. If I am a brand new employee, fresh out of college, walking into this company on my first day, I don't even need to experience punishment myself to become utterly silent. No, you don't. I just need to hear the ghost story about Sarah being punished years ago. You have hit on the exact mechanism of contagion. You do not need firsthand trauma. You just need the shared perception of trauma. Yes, it's terrifying. The authors detail how the shared perception spreads like an airborne virus through two primary vectors: workflow interdependence and social similarity. If you work closely with a specific team every day, that's interdependence. Or if you share a similar demographic or professional background with your coworkers, social similarity, you communicate with them more frequently. And crucially, you trust their interpretations of reality much more deeply. Exactly. This creates what sociologists call social contagion. The silence infects your immediate team, then it jumps to the wider department, then it spreads across the entire division. Until the whole organization is paralyzed by a shared hallucination of danger. Yes. It is an invisible epidemic of self-censorship. I want everyone listening to just sit with that reality for a moment. You might be holding back your absolute best ideas, your most innovative solutions right now, because of a ghost story about a former employee that isn't even entirely true. But while the fear might be exaggerated, the effect on the company is devastatingly real. Which brings us to the fallout. Why does this collective silence ultimately destroy the organizations that foster it? What is the actual tangible cost to the business when everyone keeps their mouths shut to protect the naked emperor? Well, the first, most immediate casualty of a silent organization is the quality of its decision-making and its capacity for change management. Makes sense. It is a fundamental law of complex systems. Without diverse input, without anyone authorized to point out the flaws, blind spots, or risks, organizational decisions are objectively worse. And to explain why, the authors utilize a brilliant concept from organizational learning theory called double loop learning. They do. Let's really unpack double loop learning, because I think understanding this mechanism is a superpower for anyone trying to navigate or fix a broken system. The best way to understand it is to imagine a standard thermostat in a house. Okay, a thermostat. Single loop learning is when the thermostat notices the ambient temperature in the room has dropped below the set point, so it triggers the furnace to turn on and heat the room. It identifies a localized error and executes a predefined fix. Exactly. In a corporate environment, single loop learning is identifying a typo in a quarterly report and correcting it, or noticing a machine on the assembly line is jammed and unjamming it. It's necessary, but it's superficial. Very superficial. Double loop learning is profoundly different. It requires stepping outside the immediate problem. So it's not just fixing the error. Right. It's asking, why is the thermostat set to 65 degrees in the first place? Who programmed that assumption? Is 65 degrees actually the optimal temperature for this specific environment? Or are we just following an outdated rule? It's the difference between doing things right and asking if we are doing the right things. I love that phrasing. It's questioning the underlying assumptions, the foundational policies, the very premises upon which the business operates. And here is the fatal blow. Organizational silence completely, systematically prevents double loop learning. Because no one can ask the big questions. If employees are too terrified to question the underlying assumptions of a failing strategic direction, if they can't say, hey, I know we are pivoting to video, but all our user data shows our audience only wants text, the company can only ever make superficial single-loop fixes. They're just rearranging the deck chairs on the Titanic. Exactly. Yeah. Because they cannot question the core strategy, they cannot adapt to shifting markets or new realities. The errors persist, they compound in the dark, and eventually they intensify to the point of structural failure. The company just loses its evolutionary capacity. It does. And while the company is slowly drifting towards structural failure, what is happening in the executive suite? Because they aren't hearing any of this alarm. No,
They are living in a manufactured utopia. A manufactured utopia. The paper identifies this phenomenon as the illusion of consensus. And frankly, it might be the most dangerous, insidious part of the entire fallout. How does it work? The managers, who have successfully built these defensive structures to protect their egos from negative feedback, look out from their corner offices at their perfectly silent, nodding workforce. And they don't hear any complaints. They don't encounter any pushback on their initiatives. And because human beings are prone to confirmation bias, they interpret the absence of dissent as the presence of enthusiastic agreement. They think, my goodness, this new software rollout is going flawlessly. Everyone loves my vision. It is a profound, terrifying false consciousness. They are steering a massive corporate ship, making multi-million-dollar decisions based on completely distorted, aggressively sanitized, overly positive data. Which is a recipe for disaster. They are accelerating the ship straight toward the iceberg precisely because the crew has collectively agreed through the grapevine that mentioning the concept of icebergs is detrimental to your career trajectory. It is the perfect storm of institutional self-deception. But the fallout of the silence isn't merely captured in the company's declining profit margins, its failed product launches, or its strategic blunders, is it? No, there's a much darker, deeply personal, and deeply human cost, which the authors explore in the final major dimension of their framework. We must examine the human toll. How does living and working in this suffocating climate of silence actively degrade the individual employee's cognition, their emotional attitudes, and their daily behavior? This is where the academic theory translates into the visceral daily reality of your listeners. Right. What actually happens to your psychology, to your spirit, when you are forced to swallow your words 8 hours a day, 5 days a week, year after year? The authors argue that the first major psychological impact is a profound, pervasive feeling of being unvalued. Feeling unvalued. To explain this, they draw heavily on psychological research regarding procedural justice. What does that mean? What years of studies have shown is something quite beautiful about human nature. Employees do not actually need to get their way all the time to feel satisfied or respected. That's reassuring. They are capable of handling rejection. But they absolutely do need the process to be fair. Even if an employee's idea is ultimately rejected by management, simply being granted the dignity of a hearing makes them feel valued. Being allowed to speak, to advocate for their perspective, to be acknowledged as a thinking entity. It makes them feel like a valued, respected member of the corporate community. You just fundamentally need to know that you exist in the eyes of the machine. You need evidence that your mind has value. Yes, and a climate of silence aggressively strips that dignity away. Wow. When you are systematically denied a voice, when your input is structurally rendered irrelevant, it destroys your fundamental trust in the organization. Your commitment to the company's broader goals evaporates. We become profoundly alienated from the work itself. And when alienation sets in, it invariably leads to a loss of control. I think this touches on something elemental to human psychology. We all possess a deep-seated need for a sense of agency. A feeling that we can exert some small measure of influence or control over our immediate environment. It is a foundational psychological need. And when an organization enforces silence, they are explicitly denying the employee that control. The paper outlines two devastating, highly divergent psychological responses to this chronic lack of control. What's the first one? The first response is known as reactance. This is an active, hostile, almost aggressive response. When human beings feel their freedom or agency is unjustly taken away, they experience a powerful psychological drive to restore it. So what does that look like in an office? In a silent organization, an employee might try to regain a feeling of power by quietly, subtly sabotaging the company. Sabotage. They might start intentionally stealing office supplies, deliberately slowing down their workflow, hiding vital information from colleagues. Or engaging in malicious compliance. Following a flawed rule to the exact letter, knowing full well it will cause a disaster just so they can watch the system break. They lash out. They become destructive because creating chaos is the only way they can prove to themselves that they still have power. They act out because it's the only way to feel alive in a system that demands they be a ghost. What is the other response? The other response is the exact opposite. It's called learned helplessness. Learned helplessness. This is a passive, depressive, deeply withdrawing response. After repeatedly trying to speak up and being ignored or implicitly punished, the employee simply gives up. They internalize the futility.
They withdraw psychologically from the workplace. They will still show up. They will do the bare minimum required to avoid termination, but they check their soul, their creativity, and their passion at the door. They become completely, totally apathetic to whether the company succeeds or goes bankrupt. They become a warm body in a chair. But here is the agonizing part. Even if you completely surrender to learned helplessness, even if you become totally apathetic, there is still a massive internal mental toll, right? Oh, absolutely. You cannot just flip a switch and turn your brain off completely. You still have to witness the dysfunction. You cannot turn it off. Yeah. And that unavoidable reality leads to the third major psychological impact of silence: cognitive dissonance. Which is the deep, literal psychological pain of holding two conflicting realities, two conflicting beliefs in your mind at the exact same time. Imagine you are a software engineer. You know for an absolute fact, based on your expertise, that the product you are building is structurally unsound, full of bugs, and will fail miserably upon launch. But your behavior, your forced silence, your nodding in the update meetings, the daily labor you perform to build the flawed product, implies that you think everything is perfectly fine. So your body is actively acting out a lie, while your brain is internally screaming the truth. Yes. I can imagine that physically manifests as a knot in your stomach. The exhaustion of driving home from work knowing you spent the last 8 hours participating in a charade. It is incredibly taxing. The authors explain how navigating this severe dissonance leads to intense chronic stress, emotional exhaustion, and severe burnout. It requires a massive, unsustainable amount of emotional energy to maintain that fabricated facade every single day. And Morrison and Milliken make a point here that is incredibly important, touching back on our discussion of demographic dissimilarity. Oh, how does that factor in here? This cognitive dissonance is especially severe, and therefore especially harmful, for minority employees or those who fall outside the dominant demographic of the management team. Why is that? Because these individuals naturally bring different lived experiences, different cultural contexts, and different perspectives, they are far more likely to see the inherent flaws in the homogeneous majority's assumptions. They see the blind spots. Therefore, the gap between what they know to be true and what the silent culture forces them to pretend is true is much wider. They have to suppress a much larger portion of their authentic selves to maintain the mandatory silence. Exactly, leading to disproportionately higher levels of stress and burnout. We have to pause here because if we pull all of these threads together, we arrive at a tragic, almost Shakespearean irony that lies at the very heart of this research. It really is an irony. If we rewind to the very beginning of our exploration, the managers built these defensive walls, they centralized power, and they created this architecture of silence primarily because they implicitly believed through their Theory X conditioning that employees were inherently apathetic, self-interested, untrustworthy, and lazy. Right. They thought, we must exert absolute control over them, and we shouldn't listen to them because they fundamentally do not care about this company. But by forcing that silence upon them, by stripping away their procedural justice, their dignity, and their control, the managers actually manufacture the exact apathy they feared. They create the reactants and the learned helplessness. They create the uncommitted, sabotaging employees. It is a perfect, catastrophic, self-fulfilling prophecy. Management engineered the exact nightmare scenario they were trying to prevent. It is the ultimate systemic tragedy. The system continually, flawlessly validates its own worst, most cynical assumptions. The executive team looks down from the C-suite, sees a workforce characterized by learned helplessness and apathy, and says, "See, I told you they were lazy and uninvested." Thank goodness we didn't waste time asking for their input. Thank goodness we have centralized control. They completely lack the double-loop learning required to realize that their control is the primary cause of the laziness. The silence obscures its own origin. It's a vicious cycle. As we pull back from the depths of this academic framework and synthesize our exploration, the sheer scale of what Morrison and Milliken uncovered is breathtaking. It really is. We have traced an invisible, destructive thread through the modern workplace. We started with the deeply human biological fear a manager has of looking foolish, compounded by the academic conditioning that tells them they alone know best. And we watched how those hidden internal fears materialized into physical, structural walls. The hoarding of decisions, the lack of feedback channels, the defensive eye rolls. We then explored how employees,
operating as social sense makers, interpret those walls. We saw how they co-author a powerful, contagious narrative amplified by the distortions of the rumor mill that breeds a suffocating organization-wide climate of silence. And finally, we witnessed the devastating fallout. A company entirely blinded to its own compounding errors, an executive team steering a sinking ship based on the illusion of consensus. And a workforce populated by stressed, unvalued, and profoundly alienated human beings suffering through the daily pain of cognitive dissonance. And as the authors note in the concluding discussion of their research, dismantling this deeply ingrained cycle is monumentally difficult. Because the silence is systemic, interwoven into the very fabric of the organization, and completely self-reinforcing, it cannot be fixed with a superficial intervention. You cannot cure it with a friendly memo from HR or by installing a new digital suggestion box. In many cases, breaking the cycle requires a complete structural turnover in top management to fundamentally reset the underlying implicit beliefs of the organization. The old software must be completely uninstalled. That is a heavy, sobering realization about the realities of corporate power. But as we leave you today to return to your own professional lives, I want to leave you with one final haunting idea drawn from the subtext of Morrison and Milliken's incredible work. It's a powerful thought. It is something to seriously mull over on your evening commute or as you sit down and prepare for your next big cross-departmental meeting. The authors warn us that when companies eventually, inevitably fail to adapt, when they miss the boat on innovation, when the flawed product launches and the stock price plummets. The executive management almost always looks downward for a scapegoat. They blame the employees, they point to the workforce and say they were resisting change, or that they lacked the necessary engagement and agility. But I want you to consider this deeply. What if your disengagement isn't a personal moral failure at all? What if your reluctance to speak up isn't cowardice or laziness or a lack of vision? What if it is in fact a perfectly rational, highly intelligent, highly adapted survival response to a massive, invisible system precisely designed to keep you silent? The next time you find yourself sitting silently in a fluorescent lit meeting room while a truly terrible, obviously flawed idea is being praised to the heavens by your peers, I want you to ask yourself a very difficult question. Are you just surviving the gas leak? Or are you handing the emperor his invisible clothes? And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পভলভ। আর আমি নিকিতা। কোনো এক রূপকথার রাজ্যের কথা ধরুন। সেই রাজ্যের রাজা অত্যন্ত অহংকারী আর পোশাক নিয়ে তার ভীষণ বিলাসিতা। হ্যাঁ, সেই বিখ্যাত গল্পটা। ঠিক। তো একদিন দুজন প্রতারক এসে রাজাকে বোকা বানিয়ে এক অদৃশ্য পোশাক পরিয়ে দিল। তারপর সেই রাজা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে রাজপথে হাঁটতে বেরোলেন। আর রাস্তার দুই পাশে দাঁড়ানো হাজার হাজার সাধারণ মানুষ, এমনকি রাজার কাছের মন্ত্রীরাও সবাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন যে রাজার শরীরে কোনো পোশাক নেই। কিন্তু চারিদিকে একদম পিনপতন নীরবতা, মানে কেউ চাকরি হারানোর ভয়ে বা বোকা সাজার ভয়ে মুখ ফুটে সত্যিটা বলছে না। সবাই বরং উল্টো রাজার নতুন পোশাকের পরম উচ্ছ্বাসে প্রশংসা করছে। হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসনের এই রাজার নতুন পোশাক গল্পটি শত শত বছর পুরনো হলেও এর মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি কিন্তু আজও অবিশ্বাস্য রকমের প্রাসঙ্গিক। একদম তাই। গল্পের সেই নীরবতা শুধু একদল মানুষের স্তব্ধতা ছিল না, মানে সেটি ছিল ভয়ে এবং সামষ্টিক অন্ধত্বের একটা নিখুঁত চিত্রায়ন। মানুষ যখন বুঝতে পারে যে সত্যি কথা বলার পরিণাম ভয়ঙ্কর হতে পারে, তখন তারা চোখের সামনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করতেও দ্বিধা করে না। তো রূপকথার সেই নগ্ন রাজার রাজ্য থেকে যদি আমরা বাস্তব জগতের বড় বড় কর্পোরেট বা প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে চোখ রাখি, তবে দেখা যাবে এই গল্পটা আসলে প্রতিদিনই সেখানে মঞ্চস্থ হচ্ছে। খুব সত্যি কথা। কর্মীরা হয়তো প্রতিষ্ঠানের ভেতরে বড় বড় সমস্যা বা আসন্ন বিপর্যয় চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। হয়তো কোম্পানির কোনো মূল প্রোডাক্টে মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে, অথবা কোনো একটা প্রজেক্ট একদম ভুল পথে এগোচ্ছে, কিন্তু ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে সেটা বলতে তারা মারাত্মক ভয় পান। রাইট। এই যে চোখের সামনে ধস নামতে দেখেও চুপ করে থাকা, আজকের পুরো আলোচনাটি মূলত সেই নীরবতার বিজ্ঞান নিয়ে।
আর এই চমৎকার আলোচনাটি নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির গবেষক এলিজাবেথ উলফ মরিসন এবং ফ্রান্সিস জে মিলিকেনের লেখা একটি যুগান্তকারী গবেষণাপত্রের উপর ভিত্তি করে তৈরি। তো মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি একটা বিষয় মেনশন করতে চাই, মানে যারা আমাদের নিয়মিত শোনেন তাদের নিরন্তর সমর্থনের কারণেই আমরা নতুন একটা উদ্যোগ নিতে পেরেছি। হ্যাঁ, দারুণ একটা খবর আছে। মার্চ 2026 থেকে এই আয়োজনটি সপ্তাহে 2 দিন, মানে প্রতি রবিবার ও সোমবার প্রচারিত হচ্ছে। একদম। রবিবারের পর্বে আমরা মূলত ক্লাসিক পেপার বা বইয়ের পর্যালোচনা করব, আর সোমবারের পর্বে শীর্ষস্থানীয় পিয়ার রিভিউ জার্নালের প্রকাশনাগুলোর ওপর ফোকাস করা হবে। যারা আমাদের এতটা সাপোর্ট করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে এখানে একটা বিষয় একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। কেন আমরা পডকাস্টের রিলিজ সীমিত করলাম? আসলে এআই চালিত পডকাস্টের ব্যাকএন্ড ডেটা সেন্টারগুলোতে প্রচুর পরিমাণে পানির প্রয়োজন হয়, মানে পরিবেশের উপর এর একটা বড় প্রভাব আছে। ঠিক, জলবায়ু পরিবর্তন রোধের উদ্যোগে নিজেদেরই ক্ষুদ্র অবদান রাখার জন্যই সাপ্তাহিক রিলিজ সীমিত করে 2 দিনে আনা হয়েছে। তবে এতে আমাদের আলোচনার গভীরতা একটুও কমবে না। আর সেই সাথে অক্টোবর মাসের নোবেল পুরস্কার ঘোষণার দিনগুলোর যে বার্ষিক ঐতিহ্য আমাদের আছে সেটা কিন্তু অপরিবর্তিত থাকছে। হ্যাঁ, সূচনা লগ্ন থেকে চলে আসা রীতি অনুযায়ী নোবেল সপ্তাহে প্রতিদিন আমরা নোবেল বিজয়ী কাজের ওপর বিশেষ পর্ব প্রচার করব। ও আর একটা কথা, আমাদের এখন একটা ডেডিকেটেড ওয়েবসাইটও রয়েছে, লিংক শো নোটে দেওয়া আছে। দারুণ। তো আবার আমাদের সেই পেপারে ফিরে আসি। মরিসন ও মিলিকেনের এই গবেষণাপত্রটি ম্যানেজমেন্ট গবেষণায় কতটা প্রভাবশালী সেটা গুগল স্কলারের একটা সাধারণ পরিসংখ্যান দেখলেই বোঝা যায়। পেপারটি এ পর্যন্ত 5183 বারেরও বেশি সাইট করা হয়েছে। মানে এটা আক্ষরিক অর্থে একটা ক্লাসিক টেক্সট। যারা শুনছেন, চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করা থাকুক বা না থাকুক, অত্যন্ত যত্ন সহকারে তৈরি এবং কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ করা এই পেপারটি পড়ার জন্য কিছুটা সময় বের করার বিনীত অনুরোধ করছি। হ্যাঁ, লিংক শো নোটে দেওয়াই থাকবে। তো আজকের মূল লক্ষ্যটা হলো যারা মাত্রই একাডেমিক গবেষণা জগতে পা রাখছেন তাদের জন্য অত্যন্ত সহজ ও পরিভাষামুক্ত ভাষায় পেপারের প্রতিটি সেকশন বুঝিয়ে বলা। তাহলে রূপকথার সেই নগ্ন রাজার রাজ্য থেকে সরাসরি বাস্তব জীবনের শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত অফিসে প্রবেশ করা যাক। আচ্ছা, এখানে আমার প্রথম প্রশ্ন হলো, মানুষ আসলে চুপ থাকে কেন? এটা কি শুধুই ব্যক্তিগত ভয়ের বিষয়? মানে একটা অফিসে কি সবাই ব্যক্তিগতভাবে ভীত প্রকৃতির হয়? এই জায়গাটিতেই কিন্তু প্রচলিত ধারণার সাথে এই গবেষণার সবচেয়ে বড় পার্থক্য। সাধারণত আমরা মনে করি কেউ কথা বলছে না কারণ সে মানুষ হিসেবে লাজুক বা ভীতু। হ্যাঁ, আগেকার গবেষণাগুলো তো মূলত একজন ব্যক্তি কেন কথা বলে বা হুইসেল ব্লো করে সেটার ওপরই ফোকাস করতো, তাই না? ঠিক, কিন্তু মরিসন ও মিলিকেন দেখিয়েছেন যে প্রাতিষ্ঠানিক নীরবতা বা অর্গানাইজেশনাল সাইলেন্স কোনো একক কর্মীর নিজস্ব সিদ্ধান্ত নয়, এটা সম্পূর্ণ একটা সামষ্টিক বা কালেকটিভ বিষয়। এটা অনেকটা ট্রাফিক জ্যামে আটকে থাকা শত শত গাড়ির মতো। মানে সবাই জানে রাস্তা জ্যাম, সবাই প্রচণ্ড বিরক্ত, কিন্তু কেউ হর্ন বাজাচ্ছে না। একদম নিখুঁত একটা উপমা, কারণ তারা ধরে নিয়েছে হর্ন বাজালে ট্রাফিক পুলিশের কাছে জরিমানা দিতে হতে পারে, আর জ্যাম তো তাতে ছাড়বেই না, উল্টো নিজের বিপদ। তো সবাই মিলে একটা অলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে চুপ থাকাই ভালো। হ্যাঁ, এই অলিখিত সিদ্ধান্তটা একদিনে তৈরি হয় না। যখন একটা প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগ কর্মী মনে পড়ে যে সমস্যা নিয়ে কথা বললে কোনো লাভ হবে না, বরং ক্ষতি হতে পারে, ঠিক তখনই এই নীরবতার জন্ম হয়। আচ্ছা, একটু থামাই এখানে। যদি পুরো অফিসই চুপ থাকে তবে কি ধরে নিতে হবে প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু ভীতু প্রকৃতির মানুষই নিয়োগ দিচ্ছে? না না, সমস্যাটা মানুষের স্বভাবের নয়, সমস্যাটা হলো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর। মানে বিশ্বের সবচেয়ে সাহসী মানুষদের এনেও যদি এমন একটা কাঠামোর মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় যেখানে কথা বলার পরিণতি শুধু শাস্তি, তবে তারাও একসময় নিজেদের গুটিয়ে নেবে। বুঝতে পারছি। তো কাঠামো তো আর নিজে নিজে তৈরি হয় না, ম্যানেজমেন্ট বা ম্যানেজাররাই তো এগুলো তৈরি করেন। কিন্তু কেন তারা কেন জেনে শুনে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করবেন? পেপারের দ্বিতীয় সেকশনটা মূলত এটা নিয়েই। এর পেছনে ম্যানেজারদের দুটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে কাজ করে। প্রথমত, নেতিবাচক ফিডব্যাক পাওয়ার ভয়। মানুষ তো সহজাতভাবে নিজের সমালোচনা শুনতে চায় না। একদম। ম্যানেজাররা, বিশেষ করে যারা অনেক কষ্ট করে শীর্ষ পদে উঠে এসেছেন, তারা নিজেদের অযোগ্যতা বা ভুল শুনতে প্রচণ্ড ভয় পান।
মানে ধরুন একজন সিনিয়র ম্যানেজার একটা প্রজেক্ট শুরু করলেন আর নিচের দিকের কোনো কর্মী এসে বলল যে প্রজেক্টে ভুল আছে। হ্যাঁ, তখন ওই ম্যানেজার অবচেতনভাবে সেটাকে নিজের যোগ্যতার উপর আক্রমণ হিসেবে ধরে নেন। আর দ্বিতীয় বিষয়টা হলো কর্মীদের সম্পর্কে তাদের কিছু অন্তর্নিহিত বিশ্বাস। এই অন্তর্নিহিত বিশ্বাস ব্যাপারটা যদি একটু খুলে বলেন। অনেক ম্যানেজার অবচেতনভাবে বিশ্বাস করেন যে কর্মীরা মূলত শুধু নিজেদের স্বার্থই বোঝে। মানে ম্যানেজমেন্টের ভাষায় একে থিওরি এক্স বলা যায়। আচ্ছা, থিওরি এক্স। হ্যাঁ, এই তত্ত্ব অনুযায়ী ম্যানেজাররা ধরে নেন যে সাধারণ কর্মীরা কাজ ফাঁকি দিতে চায়, তাই তারা ভাবেন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত শুধু তারাই নিতে পারেন। এটা তো অনেকটা একটা জাহাজের ক্যাপ্টেনের মতো। হ্যাঁ। ক্যাপ্টেন মনে করছেন নাবিকদের কাজ শুধু নীরবে দাঁড় বেয়ে যাওয়া। ঠিক বলেছেন। সামনে কোনো বিশাল বরফখণ্ড বা আইসবার্গ আছে কিনা তা নিয়ে কথা বলার অধিকার বা জ্ঞান নাবিকদের নেই, কিন্তু নিচতলার নাবিকরা যখন জাহাজের তলায় পানি ঢুকতে দেখে তখন তারা ক্যাপ্টেনের রাগের ভয়ে চুপ থাকে। আর সেই চুপ থাকার পরিণতি হয় টাইটানিকের মতো। এখানে ম্যানেজারদের আরেকটা বড় ভুল বিশ্বাসের কথা বলি। তারা মনে করেন প্রতিষ্ঠানের ভেতরে যে কোনো ধরনের দ্বিমত পোষণ করা মানেই হলো সেটা ক্ষতিকর। মানে সবাই সবসময় একমত হবে, কেউ কোনো প্রশ্ন তুলবে না, এটাকেই তারা আদর্শ পরিবেশ ভাবেন। একদম। অথচ গঠনমূলক দ্বিমত যে একটা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য কতটা জরুরি সেটা তারা সম্পূর্ণ এড়িয়ে যান। কিন্তু সব ক্যাপ্টেনের স্বভাব কি একই রকম হয়? মানে বিশেষ কোনো পরিবেশে কি এমন স্বৈরতান্ত্রিক ধারণার জন্ম বেশি হয়? অবশ্যই কাজ করে। পেপারে খুব চমৎকারভাবে দেখানো হয়েছে যে শীর্ষ কর্মকর্তারা যদি মূলত অর্থনীতি বা ফিন্যান্স ব্যাকগ্রাউন্ডের হন তবে এই নীরবতা সংস্কৃতি বেশি দেখা যায়। ইন্টারেস্টিং। মানে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের কারণেই তারা মানুষকে একটু বেশি যৌক্তিক কিন্তু চরম স্বার্থপর সত্তা হিসেবে দেখেন, তাই তো? হ্যাঁ, তারা ভাবেন কর্মীরা শুধু নিজেদের সুবিধার জন্যই কাজ করছে, কোম্পানির ভালোমন্দ নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। আবার যদি শীর্ষ টিমের সবাই একই রকম মানসিকতার হন তখনও এই সমস্যা বাড়ে। কিন্তু এখানে আমি একটু দ্বিমত পোষণ করতে চাই। ধরুন দীর্ঘ সময় ধরে একসাথে কাজ করা শীর্ষ কর্মকর্তাদের একটা টিম, তাদের তো অনেক বেশি খোলামেলা হওয়ার কথা, কারণ তাদের বোঝাপড়া খুব ভালো। তারা কেন কর্মীদের মতামতকে ভয় পাবে? আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়, কিন্তু পেপারের রেফারেন্স দিয়ে বললে দীর্ঘ সময় একসাথে থাকার ফলে শীর্ষ টিমটি নিজেদের মধ্যেই একটা ইকো চেম্বার তৈরি করে ফেলে। ও আচ্ছা, মানে তারা নিজেদের সিদ্ধান্তগুলোকে একদম নিখুঁত ভাবতে শুরু করে। ঠিক। তখন বাইরের বা নিচুতলার যে কোনো নতুন মতামতকে তারা তাদের ঐক্যের জন্য হুমকি হিসেবে দেখতে শুরু করে। তারা ভাবে আমরা এত বছর ধরে সব ঠিকঠাক করছি, এরা নতুন এসে আমাদের ভুল ধরছে। এর সাথে কি জাতীয় বা ভৌগোলিক সংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক আছে? ভীষণভাবে আছে। যেসব দেশে বা সংস্কৃতিতে ক্ষমতা ও পদের দূরত্ব, যাকে পাওয়ার ডিস্টেন্স বলা হয়, অনেক বেশি, সেখানে এই সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করে। হ্যাঁ, অনেক সংস্কৃতিতেই তো বসের কথার ওপর কথা বলাকে বেয়াদবি ধরা হয়। একদম। আর চুক্তিভিত্তিক বা অস্থায়ী কর্মীদের ওপর নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানগুলো তো ম্যানেজাররা কর্মীদের একদমই বিশ্বাস করেন না। তারা ভাবেন এরা তো কাল চলে যাবে, কোম্পানির কি বুঝবে। পুরো কাঠামোটা বুঝতে পারছি, কিন্তু ম্যানেজারদের মনের এই ভয় আর বিশ্বাসগুলো কিভাবে সাধারণ কর্মীদের চুপ থাকতে বাধ্য করে? ম্যানেজাররা তো আর নোটিশ দেন না যে আজ থেকে কেউ বিরোধিতা করবে না। না, নোটিশ দেন না, কিন্তু তাদের এসব বিশ্বাসের কারণে প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা একটা মাত্র কেন্দ্রে কুক্ষিগত বা সেন্ট্রালাইজড হয়ে যায়। মানে নিচের দিক থেকে ফিডব্যাক নেওয়ার কোনো সিস্টেম থাকে না। রাইট। আর এখানেই চলে আসে পেপারের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ধারণাটি, সামষ্টিক উপলব্ধি বা কালেকটিভ সেন্স মেকিং। এই সমষ্টিক উপলব্ধির বিষয়টা একটু ভেঙে বলা প্রয়োজন। মানুষের একটা সহজাত বৈশিষ্ট্য হলো তারা নতুন পরিবেশে চারপাশের মানুষের আচরণ দেখে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করে। যখন কোনো একজন কর্মী সাহস করে কোনো আইডিয়া দেন এবং বস তাকে তিরস্কার করেন, তখন মিটিংয়ে উপস্থিত অন্য কর্মীরাও সেটা দেখে শিক্ষা নেয়, তাই তো? একদম। একে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলে ভাইকেরিয়াস লার্নিং, মানে অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে নিজে শিখে নেওয়া। এটা তো আমাদের প্রতিদিনের অফিসের গ্রেপ ভাইন বা কানাকানির মতো। মানে একটা পচা অ্যাপেল যেমন পুরো ঝুড়ির অ্যাপেল নষ্ট করে। হ্যাঁ, একজনের এই খারাপ অভিজ্ঞতা পুরো অফিসে কানাকানির মাধ্যমে এমন একটা ভয়ের আবহ তৈরি করে যে সবাই মিলে একটা অলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে এখানে কথা বলে কোনো লাভ নেই, উল্টো নিজের বিপদ। চুপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।
আর এভাবেই ম্যানেজারদের মনের অগোচরে থাকা ভয়গুলো সাধারণ কর্মীদের দৈনন্দিন টিকে থাকার নিয়মে পরিণত হয়। কিন্তু সবাই যদি চুপ করেই থাকে তাহলে তো অফিসের পরিবেশ খুব শান্ত থাকার কথা। আপাত দৃষ্টিতে তো এটা একটা আদর্শ কর্পোরেট পরিবেশ। তাহলে এতে ক্ষতিটা কোথায় হচ্ছে? ক্ষতিটা হয় একদম শেকড়ে। নীরবতার কারণে প্রতিষ্ঠান তার ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার সুযোগ হারায়। পেপারে একে বলা হয়েছে ডবল লুপ লার্নিং থেকে বঞ্চিত হওয়া। এই সিঙ্গল লুপ আর ডাবল লুপ লার্নিংয়ের পার্থক্যটা যদি একটু বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যায়। ধরুন, একটা কারখানায় কোনো একটা মেশিনে বারবার ত্রুটিপূর্ণ পার্টস তৈরি হচ্ছে। কর্মীরা যদি শুধু সেই খারাপ পার্টসগুলো ফেলে দিয়ে নতুন পার্টস বানাতে থাকে, সেটা হলো সিঙ্গল লুপ লার্নিং, মানে তারা শুধু উপসর্গটা ঠিক করছে। আচ্ছা। কিন্তু ডাবল লুপ লার্নিং হলো কাজ থামিয়ে এটা দেখা যে মেশিনটা বারবার এমন ত্রুটিপূর্ণ পার্টস তৈরি করছে কেন, ডিজাইনে কোনো সমস্যা নেই তো। বুঝতে পেরেছি। যখন নীরবতা বজায় থাকে তখন কর্মীরা বসের রাগের ভয়ে মূল সিস্টেমে হাত দেয় না, তারা শুধু জোড়া তালি দিয়ে কাজ চালায়। একদম। আর ভেতর থেকে প্রতিষ্ঠানটি পচতে শুরু করে। এর পাশাপাশি কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্যেরও তো বড় ক্ষতি হওয়ার কথা, কারণ চোখের সামনে ভুল হতে দেখে চুপ থাকাটা তো মানসিক যন্ত্রণার। ঠিক বলেছেন। কর্মীদের মনে তীব্র হতাশার জন্ম হয়। তারা নিজেদের মূল্যহীন ভাবতে শুরু করে এবং অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করার বা স্যাবোটাজ করারও চেষ্টা করে। পেপারে তো কগনিটিভ ডিসোনেন্স বা মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের কথাও বলা হয়েছে, তাই না? হ্যাঁ, ধরুন একজন কর্মী খুব ভালোভাবে জানেন যে তার কোম্পানির নতুন প্রোডাক্টটি অত্যন্ত নিম্নমানের, কিন্তু চাকরি বাঁচাতে তাকে বাইরে হাসি মুখে সেই প্রোডাক্টেরই গুণগান গাইতে হচ্ছে। একদম। তার ভেতরের নৈতিক বিশ্বাস এবং বাইরের আচরণের এই যে সাংঘর্ষিক অবস্থা, এটি একজন মানুষকে ভেতর থেকে দুমড়ে মুচড়ে দেয়। মারাত্মক একটা স্ট্রেস। আচ্ছা, সব বুঝলাম, কিন্তু এখানে আমার মাথায় একটা পাল্টা যুক্তি আসছে। ধরুন প্রতিষ্ঠানের দরজা সবার জন্য পুরোপুরি উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো। সবাই যদি সব বিষয়ে নিজের মতামত দিতে শুরু করে, তবে কি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে না? অনেক বেশি মতামত কি কাজের গতি কমিয়ে দেয় না? এটা খুব প্রচলিত একটা যুক্তি, তবে গবেষকরা এর চমৎকার জবাব দিয়েছেন। তারা বলছেন না যে অফিসের রং কি হবে বা দুপুরের খাবারে কি থাকবে এমন বিষয়ে সবার মতামত দিতে হবে। রাইট, সেটা তো অবাস্তব। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের মূল কৌশলগত ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কর্মীদের কণ্ঠরোধ করা হলে তা প্রতিষ্ঠানের জন্যই আত্মঘাতী। মানে সেই টাইটানিকের নাবিকদের মতো আইসবার্গ দেখার পরও চুপ থাকলে তো পুরো জাহাজই ডুবে যাবে। একদম। এখানে প্রশ্নটি কাজের গতি কমানোর নয়, প্রশ্নটি হলো অন্ধের মতো খাদের দিকে ছুটে যাওয়া থেকে প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করা। অত্যন্ত যৌক্তিক। আমরা আজকের এই গভীর বিশ্লেষণের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। নতুন গবেষক এবং নেতাদের জন্য পুরো পেপারের মূল নির্যাসটি যদি আরেকবার সংক্ষেপে তুলে ধরি। হ্যাঁ, এখানে একটা বড় ট্র্যাজেডি বা পরিহাস লুকিয়ে আছে। ঠিক। খেয়াল করে দেখুন, ম্যানেজাররা যখন দেখেন যে কর্মীরা চুপচাপ আছে, কোনো নতুন আইডিয়া দিচ্ছে না, তখন তারা ভাবেন আমার থিওরি এক্সের ধারণাই ঠিক। তারা ভাবেন কর্মীরা আসলে অলস বা কাজ নিয়ে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। অথচ তারা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেন না যে তাদের তৈরি করা এই ভয়ের সংস্কৃতি কর্মীদের অনাগ্রহের মূল কারণ। এটা একটা সেলফ ফুলফিলিং প্রফেসিতে পরিণত হয়। তারা যেটাকে কর্মীদের অযোগ্যতা ভাবছেন, সেটা আসলে কর্মীদের টিকে থাকার একটা কৌশল মাত্র। তো আজকের এই নিবিড় আলোচনাটি শেষ করার আগে শ্রোতাদের ভাবনার জন্য একটা নতুন এবং গভীর প্রশ্ন ছুড়ে দিতে চাই। অবশ্যই। ধরা যাক একটি কোম্পানি দারুণ সব পলিসি করে নারী, পুরুষ, বিভিন্ন জাতি বা ভিন্ন ভিন্ন বয়সের মানুষ নিয়োগ দিয়ে একটি নিখুঁত বৈচিত্র্যময় বা ডাইভার্স ওয়ার্কফোর্স তৈরি করল। আচ্ছা। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানে যদি প্রাতিষ্ঠানিক নীরবতা বজায় থাকে, তবে কি এই বৈচিত্র্যের কোনো সত্যিকারের মূল্য আছে? দারুণ একটা পয়েন্ট। ভিন্ন ভিন্ন পটভূমি থেকে আসা মানুষগুলো যদি ভয়ে তাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতেই না পারে, তবে কি এটি শুধুই বাইরে থেকে দেখানো এক ধরনের মিকি বহুমাত্রিকতা নয়? এটি সত্যিই গভীর ভাবনার উদ্রেক করে। বৈচিত্র্য তখনই অর্থপূর্ণ হয় যখন সেই বৈচিত্র্যময় কণ্ঠস্বরগুলোর প্রতি কান পাতা হয়। নীরবতার সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য একটা মৃত শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। একদম তাই। এই প্রশ্নটি যারা শুনছেন তাদের নিজেদের মতো করে ভাবার জন্য রেখে গেলাম। আমাদের চারপাশে নীরবতার ভাষা বোঝার চেষ্টা করুন, কারণ অনেক সময় নৈশব্দই সবচেয়ে জোরালো সত্যিটা বলে দেয়।
হ্যাঁ, সবাই ভালো থাকবেন। শো নোট থেকে পেপারের লিঙ্কটি চেক করতে এবং ওয়েবসাইটটি ভিজিট করতে ভুলবেন না। সুস্থ থাকবেন সবাই। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पाब्लो और मैं हूं निकिता। कल्पना कीजिए एक ऐसे राजा की जिसे लगता है कि उसने दुनिया के सबसे बेहतरीन कपड़े पहने हैं, मतलब एकदम नायाब और जादुई कपड़े। वो पूरे गर्व के साथ अपने महल से बाहर निकलता है। सड़क के दोनों ओर उसकी पूरी प्रजा मौजूद है और हर कोई अपनी आंखों से बिल्कुल साफ देख सकता है कि राजा ने दरअसल कोई कपड़े नहीं पहने हैं, वो बिल्कुल निर्वस्त्र है। हाँ, लेकिन मजे की बात यह है कि कोई कुछ नहीं कहता। बिल्कुल, चारों तरफ एक अजीब सी, एक बहुत ही भारी खामोशी है। कुछ लोग तो आगे बढ़कर राजा के उन अदृश्य कपड़ों की तारीफ भी करने लगते हैं। और असली सच्चाई तो तब सामने आती है जब वो लोग अपने घरों में लौटते हैं। सही कहा। बंद दरवाजों के पीछे, सुरक्षित दीवारों के साये में, तब वे कानाफूसी करते हैं। वे एक दूसरे से कहते हैं कि भाई राजा बिना कपड़ों के है। वे सच जानते हैं, लेकिन भरे दरबार में खुलेआम ये सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। सत्ता के सामने सच बोलना ये कोई नहीं करना चाहता। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये सिर्फ किसी पुरानी किताब की कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज के दौर के कई बहुत बड़े बहुराष्ट्रीय और सफल माने जाने वाले संगठनों की असलियत बिल्कुल यही है। दफ्तर की दीवारों के पीछे, कैफेटेरिया में या वाटर कूलर के पास कर्मचारी सबको जानते हैं, उस सिस्टम की कमियों को देखते हैं। लेकिन बोर्ड रूम में या अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने कुछ भी बोलने से खौफ खाते हैं। हाँ, और आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी खामोशी के मनोविज्ञान को डिकोड करने पर आधारित है। हम ये समझेंगे कि आखिर ये सन्नाटा पैदा कैसे होता है। और ये चर्चा हवा में नहीं हो रही है, ये एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू में प्रकाशित एक असली और बेहद असरदार रिसर्च पेपर पर आधारित है। एकदम सही। और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये कोई साधारण जर्नल नहीं है। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित FT50 इंडेक्स वाला जर्नल है। इस शानदार रिसर्च को न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एलिजाबेथ वुल्फ मॉरिसन और फ्रांसिस जे मिलिकन ने लिखा है। मॉरिसन और मिलिकन का काम इस क्षेत्र में बहुत अहम है। लेकिन इस खामोशी की गहराइयों में उतरने से पहले अपने सुनने वालों के साथ कुछ बेहद निजी और महत्वपूर्ण बातें साझा करनी है। जैसा कि कई लोग जानते हैं, पिछले महीने यानी मार्च 2026 से हमने अपने इस कार्यक्रम को एक साप्ताहिक ऑडियो श्रृंखला में बदल दिया है। हाँ, अब हमारे नए अंक हर रविवार और सोमवार को आते हैं। बिल्कुल। रविवार का दिन हम किसी क्लासिक पेपर या किसी महत्वपूर्ण किताब की समीक्षा के लिए रखते हैं, जबकि सोमवार का हमारा पूरा फोकस शीर्ष सहकर्मी समीक्षित यानी पीयर रिव्यू जर्नल्स के ताजा प्रकाशनों पर रहता है। और हम अपने उन सभी वफादार श्रोताओं का दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस नई शुरुआत को इतना प्यार दिया है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ा और जरूरी कारण भी है। आज के समय में AI की मदद से बनने वाले कार्यक्रमों का हमारी प्रकृति और जलवायु पर बहुत भारी असर पड़ रहा है। सही बात है। इन AI सिस्टम्स को चलाने वाले जो विशाल डेटा सेंटर्स हैं, उनमें पानी की बहुत अधिक खपत होती है। तो अपने कार्यक्रम की साप्ताहिक रिलीज को सीमित करना जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में हमारा एक छोटा सा योगदान है। और हमने ये सुनिश्चित किया है कि इसके लिए हम अपनी चर्चाओं की गुणवत्ता और गहराई से कोई समझौता ना करें। बिल्कुल, चर्चा की गहराई वैसी ही रहेगी। इसके साथ ही हम अपनी एक पुरानी परंपरा को भी हमेशा की तरह बरकरार रखेंगे। अक्टूबर के महीने में जब नोबेल पुरस्कार सप्ताह आता है तो हर दिन नोबेल विजेताओं के काम पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे हमने शुरुआत से किया है। हाँ, और एक छोटी सी जानकारी और, अब इस कार्यक्रम की एक समर्पित वेबसाइट भी है, उसका लिंक शो नोट्स में दिया गया है। तो अब वापस अपने विषय पर आते हैं। इस पेपर की प्रासंगिकता पर बात करना बहुत जरूरी है। ये कोई ऐसा पेपर नहीं है जो किसी लाइब्रेरी में बस धूल खा रहा हो। बिल्कुल नहीं। गूगल स्कॉलर के आंकड़ों के अनुसार मॉरिसन और मिलिकन के इस पेपर का अब तक 5183 से अधिक बार हवाला दिया गया है, यानी इसे साइट किया गया है। 5183 बार, अरे वाह! ये अकेला आंकड़ा ही इसे मैनेजमेंट रिसर्च की दुनिया का एक क्लासिक टेक्स्ट बना देता है। बिल्कुल। इसलिए सुनने वालों से मेरा ये एक बहुत ही आत्मीय आग्रह है कि चाहे इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस सोच समझकर तैयार किए गए और कड़ाई से समीक्षित पेपर को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। इसका लिंक शो नोट्स में मिल जाएगा। और जो लोग एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में बिल्कुल नए हैं,
जिन्होंने बस अपनी शोध यात्रा की शुरुआत ही की है, उनके लिए हमारी आज की इस चर्चा का उद्देश्य बहुत सीधा है। हाँ, हम इस भारी भरकम अकादमिक काम को बहुत ही सरल रोजमर्रा की भाषा में डिकोड करेंगे। इसमें कोई तकनीकी शब्दावली या जार्गन नहीं होगा, ताकि हम सब इस संगठनात्मक चुप्पी यानी ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस के पीछे छिपे विज्ञान को बहुत ही सहजता से समझ सकें। तो चलिए सीधे इस चुप्पी के जन्म स्थान पर चलते हैं। जब हम किसी दफ्तर में कर्मचारियों को चुपचाप सब कुछ सहते हुए देखते हैं तो पहली नजर में यही लगता है कि ये उस व्यक्ति की अपनी कमी है। लोग अक्सर यही सोचते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि शायद ये कर्मचारी बहुत डरपोक है, या उसमें आत्मविश्वास नहीं है, या वो बस किसी भी तरह अपनी नौकरी से चिपके रहना चाहता है। लेकिन ये रिसर्च इस धारणा को पूरी तरह पलट देती है। ये इस पेपर का सबसे बड़ा प्रस्थान बिंदु है। अच्छा, तो असल वजह क्या है? मॉरिसन और मिलिकन स्पष्ट करते हैं कि ये चुप्पी व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक सामूहिक घटना है, एक कलेक्टिव लेवल फिनोमिनन। इसे समझने के लिए हमें कर्मचारियों को छोड़कर उनके प्रबंधकों यानी मैनेजर्स के दिमाग के अंदर झांकना होगा। मैनेजर्स के दिमाग में? हाँ, इस चुप्पी की असली जड़ प्रबंधकों के मन में गहराई तक बैठा एक खास तरह का डर है, नकारात्मक फीडबैक का डर। मतलब कोई बुरी खबर सुनने का डर? बिल्कुल। कोई भी इंसान स्वाभाविक रूप से ये नहीं सुनना चाहता कि वो गलत है या उसका काम खराब है, लेकिन जो लोग सत्ता में होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, उनमें ये डर कई गुना ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई भी नकारात्मक बात, कोई भी सुझाव जो उनके तरीके पर सवाल उठाता है, वो सीधे उनकी क्षमता और उनके पद के लिए एक बड़ा खतरा है। वे हर हाल में खुद को सुरक्षित, सक्षम और नियंत्रण में दिखाना चाहते हैं। अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई ड्राइवर हाईवे पर तेज रफ्तार में अपनी कार चला रहा हो और अचानक कार के डैशबोर्ड पर लाल रंग की चेक इंजन की लाइट चमकने लगे। बहुत सटीक उदाहरण है। अब ड्राइवर के लिए वो लाल लाइट एक बहुत बुरी खबर है, वो परेशान करने वाली है। तो ड्राइवर उस खराबी को ठीक करने के बजाय ये सोच लेता है कि इस लाइट को ही अनदेखा कर दिया जाए, या शायद उस लाइट के तार को ही काट दिया जाए ताकि वो लाल बत्ती आंखों में न चुभे। और वो मान लेता है कि कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है। हाँ, ये जानते हुए भी कि अगर इंजन में सचमुच कोई अंदरूनी खराबी हुई तो कार किसी भी वक्त बीच रास्ते में धोखा दे जाएगी। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या प्रबंधक दफ्तर में ये सब जानबूझकर करते हैं? मेरा मतलब है, क्या कोई भी मैनेजर सुबह उठकर ये सोचता है कि आज मैं अपनी टीम की हर सच्ची बात को अनसुना कर दूंगा? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर मनोविज्ञान का एक बहुत दिलचस्प पहलू सामने आता है। ज्यादातर प्रबंधकों को इसका एहसास ही नहीं होता कि वे सच सुनने से बच रहे हैं। मतलब ये अनजाने में होता है? हाँ, ये सब बहुत ही अचेतन स्तर पर यानी अनकॉन्शियस लेवल पर होता है। क्रिस आर्गरिस नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक ने इस पर काफी काम किया है। उन्होंने क्या पाया? उन्होंने बताया कि अक्सर कंपनियों में प्रबंधक जो कहते हैं और जो वो असल में करते हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। वो मीटिंग में कहते हैं कि भाई मेरे दरवाजे आप सबके लिए हमेशा खुले हैं। हाँ, ओपन डोर पॉलिसी। बिल्कुल। या कहेंगे कि मैं चाहता हूं कि आप बेझिझक अपनी राय रखें। लेकिन जब कोई कर्मचारी सच में आकर ये बताता है कि कंपनी का नया प्रोडक्ट फ्लॉप हो रहा है, तो मैनेजर चिढ़ जाता है या उस कर्मचारी को साइडलाइन कर देता है। तो ये एक तरह का दोहरा मापदंड हो गया। हाँ, पेपर इसे अंतर्निहित मान्यताओं यानी इम्प्लिसिट बिलीफ्स का नाम देता है। ये वो गहरी धारणाएं हैं जो प्रबंधकों के दिमाग में इस तरह रची बसी होती हैं कि वे खुद इनके गुलाम होते हैं। मतलब ये मान्यता एक तरह का चश्मा है जिसे पहनकर मैनेजर पूरी दुनिया को देख रहा है और उसे पता भी नहीं है कि उसने वो चश्मा पहना हुआ है। एकदम सही। तो ये अंतर्निहित मान्यताएं असल में हैं क्या? मैनेजर अपने कर्मचारियों के बारे में क्या सोच रहे हैं? इस रिसर्च में मुख्य रूप से 3 ऐसी मान्यताओं की पहचान की गई है। पहली मान्यता यह है कि कर्मचारी स्वभाव से सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, कि उन्हें बस अपने फायदे से मतलब है। हाँ, वे सोचते हैं कि कर्मचारी कामचोर होते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी तनख्वाह से मतलब होता है और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैनेजमेंट की भाषा में इसे थ्योरी एक्स कहा जाता है। थ्योरी एक्स। सोचिए कैसे मैनेजर की जो अपने केबिन के शीशे से बाहर बैठे कर्मचारियों को देख रहा है और उसे लगता है कि ये लोग बस शाम के 5 बजने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी मान्यता ये है कि प्रबंधन हमेशा सबसे बेहतर जानता है। मतलब चूंकि मैं बॉस हूँ, मेरे पास एक बड़ा पद है, इसलिए मुझे पूरी तस्वीर दिख रही है
और नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को कुछ नहीं पता। उनका काम सिर्फ आदेश का पालन करना है। हाँ, और तीसरी जो शायद सबसे खतरनाक मान्यता है वो ये कि संगठन में असहमति बहुत बुरी चीज है, जबकि सर्वसम्मति यानी कंसेंसस हमेशा अच्छी होती है। मतलब सब लोग हाँ में हाँ मिलाएं। प्रबंधकों को लगता है कि अगर मीटिंग में सब लोग एक सुर में हाँ कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और टीम में बहुत एकता है। लेकिन वो एकता असली नहीं है, वो तो बस यस मैन की फौज है। अब ये बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या हर छोटी बड़ी कंपनी में, हर तरह के उद्योग में प्रबंधक ऐसा ही सोचते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या कुछ खास तरह के दफ्तर होते हैं जहां ये मान्यताएं ज्यादा तेजी से पनपती हैं? ये हर जगह एक जैसा नहीं होता। रिसर्च गहराई से ये समझाती है कि कुछ खास तरह का माहौल इन नकारात्मक मान्यताओं के लिए एक बहुत ही उपजाऊ जमीन का काम करता है। उदाहरण के लिए, जैसे जिन कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन में अर्थशास्त्र या वित्त यानी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की पृष्ठभूमि वाले लोगों का दबदबा होता है, वहां ये कर्मचारी सिर्फ स्वार्थी होते हैं वाली धारणा बहुत ज्यादा पाई जाती है। ऐसा क्यों? फाइनेंस वालों से क्या परेशानी है? इसके पीछे एक अकादमिक कारण है। अर्थशास्त्र का पूरा पारंपरिक मॉडल ही इस बात पर टिका है कि इंसान एक होमो इकोनॉमिकस है। होमो इकोनॉमिकस मतलब? यानी एक पूरी तरह से तर्कसंगत और स्वार्थी प्राणी जो सिर्फ अपना फायदा देखता है। जब कोई सीईओ इसी बैकग्राउंड से आता है तो वो हर कर्मचारी के हर सुझाव को शंका की नजर से देखता है। अच्छा, वो सोचता है कि अगर कोई कर्मचारी किसी पॉलिसी का विरोध कर रहा है तो पक्का इसमें इसका कोई निजी स्वार्थ छिपा होगा। बिल्कुल। इसके अलावा एक और परिस्थिति है प्रबंधन टीम का कार्यकाल। जब एक ही मैनेजमेंट टीम एक साथ बहुत लंबा समय बिता चुकी होती है तो वे एक ग्रुप थिंक का शिकार हो जाते हैं। ग्रुप थिंक मतलब सबका दिमाग एक ही तरह से चलने लगता है? हाँ, उनके सोचने का तरीका एक जैसा हो जाता है। ऐसे में अगर नीचे से कोई बिल्कुल नया विचार या असहमति आती है तो वो उन्हें सिर्फ एक पेशेवर फीडबैक नहीं लगता। तो उन्हें क्या लगता है? उन्हें लगता है कि कोई उनके पूरे सिस्टम पर, उनके अस्तित्व पर हमला कर रहा है। इसके अलावा उन जगहों पर भी ये ज्यादा होता है जहां सत्ता की दूरी यानी पावर डिस्टेंस बहुत अधिक होती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। हमने देखा है कि अक्सर कंपनियां जब संकट में होती हैं या उन्हें लागत कम करनी होती है तो वे बाहर से बड़े अधिकारियों को लाती हैं ताकि कंपनी को एक नया नजरिया मिल सके। सही बात है। या फिर पैसों की बचत के लिए बहुत सारे काम ठेके पर दे देती हैं, कॉन्टिंजेंट वर्कर्स ले आती हैं। कंपनियां सोचती हैं कि बाहर के लोग आकर चीजें ठीक कर देंगे, लेकिन ये रिसर्च कुछ और ही इशारा कर रही है। क्या ये ठेके के कर्मचारी और लागत नियंत्रण की नीतियां सच में कुछ सुधारती हैं या ये उस खामोशी की खाई को और चौड़ा कर देती हैं? असल में ये चीजें स्थिति को और भी बदतर बना देती हैं। सच में? हाँ, जब कोई संगठन बहुत अधिक लागत नियंत्रण पर जोर देता है या बड़ी संख्या में ठेके के कर्मचारियों पर निर्भर हो जाता है तो शीर्ष प्रबंधन और निचले स्तर के बीच एक मनोवैज्ञानिक दूरी बन जाती है, एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस। तो मैनेजर क्या सोचते हैं इन ठेके वालों के बारे में? प्रबंधन सोचता है कि ये ठेकेदार तो बस अपने पैसे के लिए काम कर रहे हैं, इन्हें कंपनी के भविष्य से क्या लेना देना, हम इनकी बात क्यों सुने। अरे बाप रे। आप एक कारखाने का उदाहरण लीजिए। वहां ठेके पर काम करने वाले किसी मजदूर ने मशीन में कोई बड़ी सुरक्षा खामी देखी। हाँ। लेकिन उसे पता है कि अगर उसने प्रबंधन को ये बताया तो वे उसे गंभीरता से लेने के बजाय शायद उसी को काम से निकाल देंगे, क्योंकि वे मानकर बैठे हैं कि ये बस काम से बचने का बहाना बना रहा है। तो क्या होता है? वो चुप रहता है। मतलब पैसे बचाने के चक्कर में संगठन अपने आंखें और कान दोनों बंद कर लेता है, वो सच देखने से अंधा हो जाता है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि किसी मैनेजर के दिमाग में पलने वाला ये डर पूरे दफ्तर की नियम पुस्तिका या पॉलिसी कैसे बन जाता है? ये व्यक्ति से निकलकर एक साझा धारणा या शेयर्ड परसेप्शन का रूप कैसे ले लेता है? ये संक्रमण ही सबसे अहम है। जब प्रबंधकों के मन में ये अंतर्निहित मान्यताएं मजबूत हो जाती हैं तो वो दफ्तर के ढांचे को उसी के अनुसार ढालना शुरू कर देते हैं। ढांचा बदलना मतलब फैसले लेने की ताकत सिर्फ ऊपर के कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में सिमट जाती है। इसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। सब कुछ टॉप डाउन हो जाता है। हाँ, और ऊपर तक फीडबैक पहुंचने के सारे औपचारिक रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। अगर कोई फीडबैक बॉक्स होता भी है तो उसे कभी खोला नहीं जाता।
और वो जो टाउन हॉल मीटिंग्स होती हैं? वो टाउन हॉल मीटिंग सिर्फ भाषण देने का मंच बन जाती हैं, जहां कोई असली सवाल नहीं पूछा जा सकता। ये तो बिल्कुल स्कूल के क्लासरूम की तरह हो गया, जहां एक दिन किसी बच्चे ने हिम्मत करके टीचर से कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया। बहुत बढ़िया तुलना है। अब टीचर को जवाब नहीं आता था या उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ, तो उन्होंने इस बच्चे को बुरी तरह डांटकर क्लास में पीछे खड़ा कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है? कोई और बच्चा सवाल नहीं पूछेगा। बिल्कुल, पूरी क्लास ने आपस में बिना एक भी शब्द कहे ये तय कर लिया कि आज के बाद इस क्लास में कोई अपना हाथ नहीं उठाएगा। सबने समझ लिया कि यहाँ सवाल पूछना खतरे से खाली नहीं है। और इसी प्रक्रिया को रिसर्च की भाषा में कलेक्टिव सेंस मेकिंग या सामूहिक समझ कहा जाता है। कलेक्टिव सेंस मेकिंग। हाँ, कर्मचारी कोई मशीन नहीं है। वे अपने आसपास के माहौल को पढ़ते हैं, इशारों को समझते हैं। वे लगातार सुराग तलाशते हैं कि इस दफ्तर में टिके रहने का क्या तरीका है, कि सरवाइव कैसे करना है। अगर वे देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने पिछली बार मैनेजमेंट की किसी नीति का विरोध किया था, उसे पिछले 2 साल से प्रमोशन नहीं मिला है, तो ये सुराग उनके लिए काफी है। लेकिन इस खामोशी को फैलने में किस चीज से सबसे ज्यादा मदद मिलती है? मान लीजिए अगर एक दफ्तर में लोग आपस में बहुत ज्यादा घुले मिले हैं, डेंस नेटवर्क्स हैं, तो क्या वहां चुप्पी का ये वायरस ज्यादा तेजी से फैलेगा? 100%। मॉरिसन और मिलिकन ने इस पे बहुत जोर दिया है। अच्छा, तो वहाँ सोशल कंटेजियन होता है। मतलब धारणाएं एक छूत की बीमारी की तरह फैलती हैं। बिल्कुल। अगर राहुल कॉफी मशीन के पास आकर बताता है कि भाई मैंने बॉस को उस नए वेंडर की समस्या बताई थी और बॉस ने उल्टा मुझे ही डांट दिया, तो अब ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं रही। सही कहा। बाकी के जो 20 लोग वहाँ खड़े हैं, वे राहुल के अनुभव को ही अपना सच मान लेते हैं। भले ही उन्होंने खुद कभी बॉस से कुछ ना कहा हो, लेकिन अब वे सब चुप हो जाएंगे। ये एक अदृश्य नियम बन जाता है कि बॉस को बुरी खबर मत दो। अब हम इस चर्चा के सबसे गंभीर और आखिरी पड़ाव पर आते हैं। इन सब का अंजाम क्या होता है? ये खामोशी संगठन और कर्मचारियों के साथ क्या करती है? लेकिन यहाँ मैं जानबूझकर एक चुनौती भरा सवाल, एक पुशबैक रखना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, पूछिए। मैनेजमेंट अक्सर ये तर्क देता है कि भाई एक कंपनी को अपना बिजनेस चलाना होता है। मान लीजिए शुक्रवार को किसी नए सॉफ्टवेयर का लॉन्च होना है। अगर उस हफ्ते हर एक कर्मचारी अपनी राय देने लगे, कमियां निकालने लगे, तो काम की गति तो बहुत धीमी हो जाएगी। क्या बहुत ज्यादा फीडबैक सिर्फ एक तरह का शोर नहीं है जो फैसले लेने की रफ्तार को मार देता है? आखिर हर बात पर बहस तो नहीं की जा सकती। ये तर्क बहुत ही आम है और कई बार आकर्षक भी लगता है कि हमें काम की गति बढ़ानी है। ये सच है कि बहुत अधिक इनपुट या बहस से फैसले लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इस रिसर्च पेपर में बहुत ही तार्किक ढंग से ये समझाया गया है कि असली खतरा काम के धीमा होने में नहीं है, बल्कि गलत दिशा में बहुत तेजी से भागने में है। गलत दिशा में तेजी से भागना? जो आप अपनी कंपनी में अलग राय रखने वालों को दबा देते हैं, माइनॉरिटी व्यू पॉइंट को कुचल देते हैं, तो आप शायद तेजी से काम कर लें, लेकिन आप जो गलती करेंगे उसकी कीमत बहुत भारी पड़ेगी। संगठन अपनी गलतियों को सुधारने की क्षमता खो देते हैं। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। आगरिज इसे डबल लूप लर्निंग की कमी कहते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। हाँ बताइए। मान लीजिए एक कमरे में बहुत गर्मी हो रही है। सिंगल लूप लर्निंग ये है कि आप गर्मी देखकर एसी को और तेज कर दें। ठीक है, फौरन समस्या का समाधान हो गया। लेकिन डबल लूप लर्निंग ये पूछना है कि आखिर इस कमरे में इतनी गर्मी आ कहाँ से रही है? ओह, खिड़की खुली हुई है, हमें खिड़की बंद करनी चाहिए। अरे वाह, क्या बात है। जो संगठन चुप्पी के शिकार होते हैं, वे कभी खिड़की बंद नहीं करते, वे बस एसी तेज करते रहते हैं। यानी वे सिर्फ लक्षणों का इलाज करते हैं, बीमारी का नहीं। बिल्कुल। वे उन गलतियों को पैदा करने वाली अपनी बुनियादी नीतियों पर कभी सवाल नहीं उठाते और अंत में एसी खराब हो जाता है और कंपनी डूब जाती है। ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। मतलब वो कार चेक इंजन लाइट के जलने के बावजूद पूरी रफ्तार से खाई की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अंदर बैठे सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो डैशबोर्ड की तरफ उंगली उठाए। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का उस इंसान पर क्या असर होता है जो हर दिन ये सब देख रहा है और फिर भी चुप है? इस चुप्पी का सबसे विनाशकारी मनोवैज्ञानिक असर कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। वो कैसे? जब इंसान बार बार ये देखता है कि उसकी बात का कोई महत्व नहीं है, तो उसे लगता है कि उसका अपने काम पर, अपने आसपास के माहौल पर कोई नियंत्रण नहीं है। और यही जन्म होता है संज्ञानात्मक असंगति का, यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस। संज्ञानात्मक असंगति, ये सुनने में थोड़ा क्लिनिकल लग रहा है। एक आम कर्मचारी की जिंदगी में ये कैसा महसूस होता है? आप इसे एक सेल्स पर्सन के नजरिए से देखिए।
वो व्यक्ति हर दिन फील्ड में जाता है, ग्राहकों से मिलता है और वो सच्चाई जानता है कि उसकी कंपनी का प्रोडक्ट बाजार में सबसे खराब है। ग्राहक उसे रोज गालियां दे रहे हैं। हाँ, उसे पता है कि इस प्रोडक्ट में क्या खामियां हैं, लेकिन जब वो वापस अपने दफ्तर आता है, मैनेजमेंट के सामने बैठता है, तो उसे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाकर कहना पड़ता है कि सर, प्रोडक्ट बहुत शानदार है और हमारी रणनीति एकदम सही दिशा में जा रही है। ओहो। अब सोचिए उसके अंदर का सच जो उसने खुद अनुभव किया है और उसका बाहरी बर्ताव जो उसे अपनी नौकरी बचाने के लिए करना पड़ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। ये जो दिमागी टकराव है, ये जो हर दिन खुद से झूठ बोलने का तनाव है, यही संज्ञानात्मक असंगति है। ये इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। ऊर्जा खत्म हो जाती होगी। बिल्कुल, तनाव बढ़ता है और वो मानसिक रूप से अपने काम से पूरी तरह कट जाता है, जिसे आज हम क्वाइट क्विटिंग कहते हैं। क्वाइट क्विटिंग मतलब वो बस शरीर से दफ्तर में है, दिमाग से नहीं। और इस रिसर्च में एक और बहुत ही संवेदनशील बात उजागर की गई है। वो क्या? यह स्थिति उन कर्मचारियों के लिए कहीं ज्यादा पीड़ादायक होती है जो बहुसंख्यक समूह से अलग हैं। बहुसंख्यक समूह से अलग मतलब वे लोग जो अपनी जनसांख्यिकी या डेमोग्राफिक्स के हिसाब से अलग हैं। जैसे अगर कोई किसी खास नस्ल का हो या बोर्डरूम में बैठी इकलौती महिला हो। बिल्कुल, जो लोग शीर्ष प्रबंधन से अपनी पृष्ठभूमि, जेंडर या नस्ल के हिसाब से मेल नहीं खाते, वे इस खामोशी के माहौल में खुद को बहुत ज्यादा अकेला और असुरक्षित महसूस करते हैं। वो पहले से माइनॉरिटी में है। हाँ, वे पहले से ही खुद को बाहर का हिस्सा महसूस कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर उन्हें अपनी कोई बात कहनी हो जो बहुमत से अलग हो, तो उन पर दबाव दोगुना होता है। उन्हें लगता होगा कि अगर कुछ बोला तो सब उनके खिलाफ हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि न केवल उनकी बात को खारिज कर दिया जाएगा, बल्कि ये मान लिया जाएगा कि उनके जैसे लोगों की इस संगठन में कोई जगह ही नहीं है। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि बिना किसी लिखित नियम के संगठन के भीतर अनजाने में ही एक तरह का भेदभाव पनपने लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रबंधन ने उस सन्नाटे को सर्वसम्मति और शांति समझ लिया था। ये पूरी चर्चा वाकई बहुत सी परतों को उधेड़ती है। अक्सर हम देखते हैं कि बड़े अधिकारी सम्मेलनों में या सोशल मीडिया पर शिकायत करते हैं कि आजकल के कर्मचारी काम में अपना दिल नहीं लगाते, उनमें कोई प्रेरणा नहीं है, वे अनएंगेज्ड हैं। हाँ, ये बहुत सुनने को मिलता है। और वे इसका सारा दोष बड़ी आसानी से कर्मचारियों की पीढ़ी या उनकी नीयत पर मर देते हैं। लेकिन जैसा कि इस रिसर्च पेपर ने बहुत ही तार्किक और अकादमिक तरीके से साबित किया है, असल जिम्मेदारी उस प्रबंधन की ही है जिसने अनजाने में एक ऐसा मजबूत ढांचा खड़ा कर दिया जहां सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह बन गया। बिल्कुल सही निष्कर्ष है। अब इस चर्चा के अंत में मैं आप सभी सुनने वालों के लिए एक ऐसा गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं जिस पर इस पेपर में सीधे तौर पर तो बात नहीं की गई है, लेकिन ये हमारी आज की समझ से सीधे जुड़ता है। जरा सोचिए, आप किसी बहुत बड़े संगठन में काम करते हैं। वहां एकदम सन्नाटा है, कोई बहस नहीं हो रही है, कोई किसी बात का विरोध नहीं कर रहा है, हर कोई बस मुस्कुरा रहा है। हाँ, हर मीटिंग बहुत शांति से खत्म हो जाती है और हर कोई हर बात पर बिना कोई सवाल किए सहमत हो रहा है। तो क्या वो संगठन की सबसे बड़ी सफलता और आपसी तालमेल की निशानी है, या फिर कुछ और? या फिर ये एक छिपे हुए बहुत ही गहरे डर का लक्षण है जो उस संगठन को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है? क्या वो शांति दरअसल किसी शानदार भविष्य की नहीं, बल्कि एक खत्म हो चुके भरोसे और दफन हो चुके विचारों के कब्रिस्तान की शांति है? बहुत ही सोचने वाली बात है ये। इस सवाल के साथ हम आज की अपनी इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। शो नोट्स में दिए गए पेपर के लिंक को जरूर चेक कीजिएगा और इस विषय में और गहराई से पढ़िएगा। ये एक ऐसा काम है जो किसी भी दफ्तर को देखने के आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। समय निकालने और इस चर्चा को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। Forestil dig et stort, lyst mødelokale. Projektoren summer svagt. På lærredet er der en række grafer, der viser, at alt går fuldstændig efter planen. Og for enden af bordet står direktøren. Storsmilende, begejstret for den nye strategi, der lige er rullet ud. Men altså, der er et massivt problem. Et ret åbenlyst det der slagsen. Præcis. Strategien fungerer bare slet ikke. Den er faktisk ved at køre virksomheden direkte i sænk. Direktøren står reelt blottet, fuldstændig nøgen,
uden et eneste stykke tøj på. Og det mest skræmmende er jo, at alle rundt om bordet godt ved det. Ja, de sidder bare og kigger. Lige præcis. Nogle af dem nikker endda anerkendende, roser ligesom tøjet snit for at behage chefen, og direktøren soler sig i det. Men senere ikke bag de lukkede døre, eller nede i hjørnet ved kaffemaskinen, på de der krypterede chatbeskeder, der viskes der. Der taler alle om sandheden. Alle ved, at chefen er nøgen. Men absolut ingen siger det højt. Og altså, det lyder jo bare som H.C. Andersens klassiske eventyr om kejserens nye klæder. Men i moderne ledelsesforskning er det her ikke noget eventyr. Det er faktisk den barske virkelighed i utallige organisationer verden over. Det er så vildt at tænke på. Det er det, og det udgør ryggraden i den her helt fantastiske forskningsartikel af Elizabeth Wolfe Morrison og Francis J. Milliken fra New York University. Et artikel fra Academia of Management Review. Tidsgangene hver dag, så er det tidsskrift altså indekseret på den her meget prestigefyldte FT50-liste. Det er et af verdens mest anerkendte tidsskrifter overhovedet. Nemlig. Det er den absolute elite inden for ledelsesforskning. Inden vi for alvor træder ind i det der mødelokale og undersøger mekanismerne bag den her farlige stilhed, så skal vi lige vende en vigtig opdatering. Vi har nemlig et nyt format her fra marts 2026, hvor vores podcast udkommer hver uge på en ny måde. Ja, vi er overgået til udelukkende at udkomme hver søndag og mandag. Om søndagen tager vi fat i en klassisk artikel eller bog, og om mandagen fokuserer vi så på de nyeste publikationer fra de allerbedste peer-reviewed tidsskrifter. Og altså, grunden til, at vi gør det her, det bunder faktisk i et klimaperspektiv. Vi elsker jo jer, vores loyale abonnenter, men vi er også nødt til at se i øjnene, at AI-assisteret podcast som vores kræver enormt meget vandkøling i de datacentre, der ligger bagved. Det er et massivt klimaaftryk. De der servere kører jo i døgndrift. Så ved at begrænse vores udgivelser, giver vi ligesom et konkret bidrag tilbage til klimaindsatsen, uden at vi mister dybden i vores samtaler. Lige præcis, men bare rolig. Vores årlige tradition i oktober er fuldstændig intakt. Når Nobelprisugen starter, så dækker vi det hver eneste dag. Præcis som vi har gjort siden begyndelsen. Og vi har faktisk også fået en dedikeret hjemmeside nu. Linket ligger i show notes. Ja, tjek den ud. Og i de show notes finder du også et link til dagens artikel. Den er altså ifølge Google Scholar citeret mere end 5.183 gange. Det er fuldstændig uhørt. Det er simpelthen at bryde teksten ned. Fuldstændig uden akademisk jargon, så vi alle kan forstå de her usynlige kræfter på arbejdspladsen. Så tilbage til det der mødelokale, hvor alle smiler, mens skibet synker. Hvorfor holder folk overhovedet mund? Jo, altså Morrison og Milliken introducerer det, de kalder organisatorisk tavshed. Organizational silence. Og fejlen, som rigtig mange ledere begår her, er, at de tror, det er et individuelt problem. At det er medarbejderen, der bare er svag? Lige netop. At personen mangler mod eller er for konfliktsyg. Men forfatterne vender det fuldstændig på hovedet. Organisatorisk tavshed er et kollektivt fænomen. Det er simpelthen hele organisationens kontekst, der kvæler informationen, uanset hvor modig den enkelte faktisk er. Okay, lad os pakke det her ud. For jeg ser det ligesom at sidde i et passagerfly højt oppe. Pludselig lugter der svagt af røg i kabinen. Din første indskydelse er jo at trykke på knappen og tilkalde stewardessen. Ja, selvfølgelig. Man tænker, der er far på færde. Præcis. Men i stedet begynder du lige at skele til de andre. Manden ved siden af læser videre i sin avis. Kvinden foran lytter til musik. Og så begynder du at tvivle, ikke? Hvis ingen af dem reagerer, så er det nok bare mig. Måske er det bare maden i ovnen. Det er systemet og flokmentaliteten i kabinen, der lammer dig. Det er en perfekt analogi. Vi er jo flokdyr, og vi bruger hele tiden de andre som et socialt kompas. Men det, der er fascinerende her, er, hvem der egentlig designer den der kabine på en arbejdsplads. Hvor starter kulturen? Og papiret peger direkte mod toppen af hierarkiet. Det starter med lederens frygt. Men ingen moderne leder vågner vel op og tænker, i dag vil jeg undertrykke alle gode idéer og skabe frygt vel. Det lyder altså lidt karikeret. Er der virkelig nogen, der bevidst ignorerer deres ansatte på den måde? Nej, og det er netop pointen. Det er overhovedet ikke bevidst. Det er drevet af implicite, ubevidste overbevisninger hos ledelsen. Især noget, der i litteraturen hedder Theory X. Theory X? Hvad dækker det over i praksis?
Det er en indgroet antagelse om, at mennesker grundlæggende er selviske og dovne. Hvis en leder helt ubevidst har det verdensbillede, så tror de, at medarbejderne vil undgå arbejde, hvis de kan. Og lederen tænker, jeg er chefen, jeg ved bedst. Og så bliver kritik opfattet som et angreb. Ja, uenighed bliver læst som illoyalitet, mens total konsensus ses som tegn på en sund virksomhed. Og det forstærkes især, hvis topledelsen har en meget stram økonomisk eller finansiel baggrund, hvor alt er sat i kasser, eller hvis hierarkiet er ekstremt stejlt. Så hvis en almindelig ansat kommer med reel konstruktiv kritik, rammer det lederens ubevidste forsvarsmekanismer. Præcis. Det opfattes som en trussel mod deres troværdighed og kontrol, og især hvis topledelsen kun ansættes udefra og aldrig har haft hænderne nede i maskinrummet. De mangler simpelthen tillid til folkene på gulvet. Okay, det forklarer lederens egen psykologi. Men de tanker lukker jo ikke i sig selv munden på 100 ansatte. Der må være nogle strukturer. Helt sikkert. Altså noget, de ansatte fysisk støder ind i, som kvæler kommunikationen. Ja, de ubevidste antagelser bliver til centraliseret beslutningstagning. Alt skal pludselig godkendes i 5 led. Der er ingen formelle kanaler til feedback, men det værste er faktisk det psykologiske tyngdepunkt, de kalder collective sense-making, kollektiv meningsskabelse. Hvordan fungerer det? Jamen, forestil dig en kollega, der kritiserer en ny politik på et afdelingsmøde. Lederen reagerer bare med et stramt smil. Et halvt år senere bliver den samme kollega forbigået til en forfremmelse. Her er, hvor det virkelig bliver interessant. For så begynder medarbejderne at forbinde prikkerne, uanset om de to ting faktisk hænger sammen eller ej. Nemlig. Rygterne i krogene begynder at forstørre begivenheden, og så bliver opfattelsen pludselig til virkelighed. Medarbejderne tegner et usynligt, mytologisk kort over arbejdspladsen. Gå ikke ind til chefen med dårlige nyheder, for så bliver du ædt. Det er en utrolig præcis måde at sige det på. Og når alle så holder mund, kigger ledelsen ud over kontoret og tænker, se, vi er alle enige, alt fungerer. De bekræfter utilsigtet deres egen fordom om, at ingen har noget vigtigt at sige. Det er en ret brutal spiral. Men hvem rammes egentlig hårdest af den her dynamik? Papiret viser vel, at den organisatoriske tavshed ikke er ligeligt fordelt overhovedet. Langt fra. Og her peger forfatterne på proposition 13 i artiklen, som handler om demografiske kløfter. Hvis du er medarbejder og kigger op mod ledelsen, og du kun ser folk, der er fundamentalt anderledes end dig selv. Altså i forhold til køn, eller alder, eller etnicitet. Lige præcis. Alder, race, baggrund. Så skaber det en ret dyb mistillid. Medarbejderne fra minoritetsgrupper aflæser lynhurtigt situationen og konkluderer, at deres unikke perspektiv simpelthen ikke vil blive forstået eller værdsat. Så hvad betyder alt dette egentlig for virksomheden? Det betyder jo reelt, at ledelsens ubevidste frygt ender med at blive til ren systemisk diskrimination. De mest forskelligartede og måske vigtigste stemmer i rummet er dem, der først lærer at tie stille af ren og skær selvbeskyttelse. Ja, og dermed undergraver man fuldstændig enhver ambition om pluralisme og mangfoldighed. Det samme gør sig gældende for midlertidige ansatte eller freelancer. De føler, de sidder yderst på bænken, så de siger absolut intet. Og hvis alle bare holder mund, er der jo fred og ro på overfladen. Men hvad koster den her falske fred egentlig? Både for virksomheden og for den enkelte ansatte. For organisationen er prisen enorme mængder af elendige beslutninger. Det blokerer for det, forskerne kalder double loop learning. Altså evnen til at opdage og rette fundamentale fejl i systemet i tide. Double loop learning. Det lyder lidt teknisk. Kan du give et eksempel på det? Tænk på en termostat. Hvis rummet skal være 20 grader, og det falder til 18, så tænder termostaten automatisk. Det er single loop learning. Man retter en akut fejl. Okay, så hvad er double loop så? Double loop learning er, hvis systemet stopper op og spørger, hvorfor skal her egentlig være 20 grader? Er vinduet åbent? Er det overhovedet det rigtige mål? I en virksomhed præget af tavhed udfordrer man aldrig de grundlæggende regler. Man slukker bare små ildbrande, mens hele husen langsomt brænder ned. Hold da op, så man optimerer på noget, der i sin grundvold er defekt. Tænk på en sælger, ikke? Forestil dig, du er den sælger, der hver dag står over for rasende kunder på grund af et elendigt produkt. Ja, det er en utrolig svær position. Men hver gang du træder ind på kontoret, skal du tage en maske på og spille med på ledelsens illusion om, at produktet er et genialt mesterværk. Den der indre konflikt, den kognitive dissonans, det må da smadre folk mentalt. Det gør det også. Dette rejser et vigtigt spørgsmål omkring medarbejderens velbefindende. Den kognitive dissonans fører til en knusende følelse af mangel på kontrol. Man mister motivationen og trækker sig psykologisk. I de yderste konsekvenser kan det faktisk føre til direkte sabotage af virksomheden, fordi folk er så desillusioneret.
for at få en eller anden form for kontrol tilbage, ja, det giver utrolig god mening. Vi skal til at runde af nu. Artiklen minder os virkelig om, at tavshed ikke bare er fravær af støj, vel? Det er ofte det mest larmende symptom på dybe systemfejl. Og hvis vi forbinder dette til det større billede, så er det afgørende at forstå ansvaret. Det ultimative ansvar ligger aldrig hos den enkelte modige medarbejder, der forventes at ofre sig selv for at sige sandheden. Det ligger tungt på ledelsens skulder at ændre de her indbyggede strukturer. Det er virkelig en tanke, der sætter tingene i perspektiv. Og kære lytter, vi vil gerne efterlade dig med en ret provokerende tanke her til sidst. Vi lever i en tid, hvor ledelsen måske snart indfører AI-systemer. Systemer, der ubevidst lytter med på, hvor meget eller hvor lidt medarbejderne taler sammen digitalt på Slack eller Teams for at måle trivsel. Det ser vi allerede. Præcis. Tror du, at sådan en teknologi vil kurere den organisatoriske tavshed ved at gennemtvinge feedback? Eller vil den form for overvågning bare tvinge frygten og tavsheden endnu længere ned i skyggerne, ned i de private chats, hvor ingen algoritme nogensinde finder sandheden? Tænk lidt over det, indtil vi lyttes ved igen.